अखिलेश जी, मैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, डीएमके सभी मेंबर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आई थिंक सो दिस इज द लास्ट वीक ऑफ द मानसून सेशन. इन लास्ट 3 weeks the entire monsoon session was washed out. Who is responsible? Who is accountable? You have been elected. You are fortunate, lucky, you only just to bear your responsibility towards your electoral college. But here you are not participating in debate. Even you were demanding that Home Minister should reply. अब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कह दिया है, तो अगर आप जवाब चाहते हैं तो सदन को व्यवस्थित करें. आप सदन में चाहते हैं कि माननीय गृह मंत्री जी जवाब दें, तो सदन को व्यवस्थित करिए. माननीय गृह मंत्री जी का जो आप मांग रहे थे कि माननीय गृह मंत्री जी सदन में हमको जवाब दें, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया कि हम गृह मंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार हैं, और गृह मंत्री जी चाहते हैं कि चर्चा हो, तो आप सदन को व्यवस्थित करें. आइटम नंबर 20, ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2026. ऑनरेबल मिनिस्टर. Honorable Chairperson sir, with your kind permission, I want to move that the bill to improve the efficiency, मेरी रिक्वेस्ट है, ensure independence, नीचे करिए. transparency, ये डिस्प्ले इस तरह से प्ले कार्ड डिस्प्ले करना, the qualification. ये इस तरह से प्ले कार्ड डिस्प्ले, ये न नियम परमिट करता है न चेयर करता है. अगर आप इस तरह से प्ले कार्ड डिस्प्ले करेंगे तो ये पार्ट बिल्कुल नहीं ठीक. Sir, माननीय मंत्री जी. sir, with your kind permission, I want to move that the bill to improve the efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment, terms and conditions of the service of chairperson and members of the various tribunals, the administration and functioning of the tribunals, to establish a national tribunal commission and to make consequential amendment in the related enactments and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration. अध्यक्ष जी, आज ये बहुत महत्वपूर्ण बिल सदन के समक्ष आया है. ये जो रिफॉर्म एक्सप्रेस देश में चल रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसी का ही एक ये पार्ट है, और आपने अनुमति प्रदान की है, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ. हमारे संविधान के आर्टिकल 323A और 323B में ये उपबंधित किया गया है, और बाद में एक स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत संविधान में शामिल किया गया ट्रिब्यूनल की व्यवस्था को, ये मैं बताना चाहता हूँ. और इससे देश आज़ादी से पहले भी एक हमारे यहाँ ट्रिब्यूनल था, ITAT, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, तो वो 1941 का था, लेकिन ये 76 में फिर ये ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की गई. ट्रिब्यूनल का उद्देश्य कोर्ट्स का अल्टरनेट बनना नहीं होकर मॉडर्न गवर्नेंस में टैक्सेशन, कंपनी लॉ, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी मार्केट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और अन्य स्पेशलाइज्ड रेगुलेटरी मैटर से जुड़े मामले सुलझाने हेतु एक कॉम्प्लीमेंट्री संस्था के रूप में भूमिका निभाता है, जिससे स्पीडी एंड इफेक्टिव जस्टिस डिलीवरी के अल्टीमेट गोल प्राप्त किया जा सके. ये ट्रिब्यूनल की व्यवस्था है. माननीय अध्यक्ष महोदय, समय के साथ ट्रिब्यूनल की संख्या बढ़ी, अलग अलग मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंतर्गत इसके लिए अलग अलग सिस्टम विकसित हुए. इससे ट्रिब्यूनल इकोसिस्टम में फ्रैगमेंटेशन, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वेरिएशन जैसी सामने आई चुनौतियाँ. इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने वर्ष 2015 में 15 से ही ट्रिब्यूनल के रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की, जिसके तहत फाइनेंस एक्ट 2017 द्वारा समान प्रकृति वाले ट्रिब्यूनल्स का मर्जर कर उनकी संख्या 26 से घटाकर 19 की गई, 19. इसके उपरांत ट्रिब्यूनल रूल्स 2017 एवं ट्रिब्यूनल रूल्स 2020 अधिसूचित किए गए, किंतु इनके अपॉइंटमेंट, टेन्योर, सर्विस कंडीशन और जुडिशियल इंडिपेंडेंस संबंधी प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. रोजर मैथ्यू 2019
तथा मद्रास बार एसोसिएशन 2020 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कई प्रावधानों को असंवैधानिक ठहराते हुए एक स्वतंत्र नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन की स्थापना का निर्देश दिया। इसी के लिए मैं आज आपके समक्ष बिल लेकर के आया हूँ। इसके पश्चात ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस 2021 तथा बाद में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 लागू किए गए। इसके पश्चात ट्रिब्यूनल की संख्या 19 से घटाकर 16 किया गया। इस एक्ट के कई प्रावधानों को भी सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल इंडिपेंडेंस एवं सेपरेशन ऑफ पावर सबूत मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 19 नवंबर 2025 के जजमेंट में पुनः स्पष्ट किया कि ट्रिब्यूनल मेंबर की अपॉइंटमेंट, टेन्योर, सर्विसेज, कंडीशन न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अनुरूप होनी चाहिए तथा एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से मुक्त, ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन की स्थापना आवश्यक है। एनटीसी की स्थापना आवश्यक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसी के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं न्यायिक निर्देशों को ध्यान में रखकर तथा कॉन्स्टिट्यूशनल तथा जुडिशियल फ्रेमवर्क को देखते हुए एक मॉडर्न, इंडिपेंडेंट एंड यूनिफॉर्म ट्रिब्यूनल इकोसिस्टम बनाने हेतु ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2026 लाया गया है इस मान सदन के समक्ष। मैं इस सदन के माध्यम से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह बिल ट्रिब्यूनल की सब्सटेंटिव जुरिस्डिक्शन में कोई परिवर्तन नहीं करता। प्रत्येक ट्रिब्यूनल की जुरिस्डिक्शन वही रहेगी जो उसके संबंधित पेरेंट एक्ट में निर्धारित है, अर्थात जुरिस्डिक्शन बदलने का बिल नहीं है। ये गवर्नेंस, अपॉइंटमेंट्स, इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को मजबूत करने का बिल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल के प्रमुख प्रोविजन इस प्रकार है। नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन की यानी एनटीसी की स्थापना, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज तथा हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस करेंगे। एनटीसी में 2 जुडिशियल, 2 टेक्निकल मेंबर होंगे ताकि न्यायिक व तकनीकी विशेषज्ञता समन्वय हो। ट्रिब्यूनल अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया एनटीसी के माध्यम से अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और मेरिट बेस्ड बनाया जाएगा, जिससे सर्च कम सिलेक्शन अपॉइंटमेंट तथा इंक्वायरी और रिमूवल से जुड़े कार्य शामिल होंगे। यूनिफॉर्म गवर्नेंस आदि एकरूपता के लिए डेडिकेटेड एनटीसी सेक्रेटेरिएट की व्यवस्था भी की गई है ताकि ट्रिब्यूनल का प्रशासनिक संचालन अधिक व्यवस्थित और संस्थागत हो। मेंबर्स के लिए 5 ईयर टेन्योर तथा स्पष्ट सर्विस कंडीशन का प्रावधान है, जिससे ट्रिब्यूनल की इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस मजबूत हो। एलिजिबिलिटी के लिए कोई अलग मिनिमम एज रिक्वायरमेंट निर्धारित नहीं की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ईज ऑफ जस्टिस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने तथा ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, जो भारत के लीगल व इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर को और मजबूत करेगा तथा सर्वसुलभ, समयबद्ध और प्रभावी न्याय की हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाकर विकसित भारत 2047 के संकल्प को और सशक्त करेगा। मैं इसी विश्वास के साथ मैं सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं कि सुधारों की इस कड़ी में लाए गए ट्रिब्यूनल रिफॉर्म विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करें। जैसे हमारे रोड सेक्टर में रोड आवश्यक है, रेल सेक्टर में रेल आवश्यक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे एयर सेक्टर में एयर इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक है। ऐसे ही इकोनॉमी की साइज बढ़ाने के लिए लीगल सेक्टर में बात कह रहे हैं, लीगल सेक्टर में। एक मिनट माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, पूरे देश के ट्रिब्यूनल के यूनिफॉर्मिटी के लिए एक्सेस टू जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो कृपया आप इनकी बात को सुने। आप देश के सारे ट्रिब्यूनल्स के लिए क्वालिफिकेशंस यूनिफॉर्मिटी बनाई जाए। यू आर अ सीनियर लॉयर मिस्टर बालू, you are a senior lawyer, and if law minister now he is bringing a piece of legislation for just to ensure efficiency, independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment, terms and conditions of service of chairpersons and members of various tribunals. तो प्लीज सुनिए आप सर, वेरियस ट्रिब्यूनल्स के यूनिफॉर्मिटी के लिए यूनिफॉर्मिटी के लिए सर मैं ये कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो हर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए काम करती है। ये भी रिफॉर्म है, लीगल सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का ही रिफॉर्म है। इसलिए इस रिफॉर्म को मैं सर्वसम्मति से पास करने के लिए आपसे अनुरोध करता हूँ, माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री के राधाकृष्णन, श्री अभय कुमार सिन्हा, श्री एनके प्रेमचंद्रन जी, श्री मनोज कुमार, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अगर आप सब अपने अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो अपने अपने स्थान पर चले जाइए।
इस बेल को खाली कर दीजिए और प्लीज़ काइंडली यू मूव योर अमेंडमेंट फ्रॉम योर एलोकेटेड सीट और हम आपको अनुमति देंगे। अगर आप अपने स्थान पे नहीं जा रहे हैं, इस महत्वपूर्ण बिल को, जैसा कहा हमारे लॉ मिनिस्टर ने, अगर इस पे संशोधन नहीं मूव करना चाहते हैं, आप चर्चा नहीं चाहते हैं, आप नहीं चर्चा चाहते हैं, यू आर अ पार्ट एंड पार्शियल ऑफ लॉ लेजिस्लेटिव, तो मैं सभी खंडों को सभा के निर्णय के लिए एक साथ ले लूँगा, विधेयक पर विचार करूँगा। प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। एक बार मेरा फिर आग्रह है कि आप सभी लोग, अभी भी अवसर है, दरबार साहब अभी भी अवसर है कि आप खंडवार, आपने तो पार्लियामेंट में हमेशा डिबेट पे भाग लिया अनुराग जी, आप क्या कर रहे हैं? प्रश्न ये है कि खंड 2 से 24 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 24 विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि पहली और दूसरी अनुसूची विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। अनुसूची पहली और दूसरी विधेयक का अंग बना। अब मैं एक प्रश्न फिर प्रस्तुत कर रहा हूँ, प्रीति शिंदे, मैं प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बने। अब मंत्री जी ये प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, with your permission, I move that the bill be passed. माननीय मंत्री जी ने विधेयक को पास करने के लिए प्रस्तुत किया है। आप में से किसी लोगों को अगर विधेयक पे कुछ कहना हो तो कहिए, तो सदन में आप हंगामा कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। अब तो आपने इस विधेयक में हिस्सा नहीं लिया। मैं सबसे बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सभी को अवसर दूंगा, आप सदन में चले जाएं। आपको मैं अवसर देना चाहता हूं। मैं आप बिल तो आप ने पूरा देश देख रहा है, अखिल इंटायर नेशन इज वॉचिंग यू कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रप्शन ऑफ द हाउस। इस सदन को में जहां चर्चा होनी चाहिए वहां लगातार मानसून सत्र के पहले दिन से आप लगातार व्यवधान कर रहे हैं। क्वेश्चन आवर माननीय सदस्यों का है, 0 और माननीय सदस्यगण का है। ये सब माननीय सदस्यगण बैठे हैं, सतीश गौतम जी, और उसके बाद इनको चर्चा करने की, इनको सदन विषय उठाने को नहीं मिल रहा है। गणेश जी आप हैं, अजय भट्ट जी हैं, इनके विषय आए हैं, तो आप क्वेश्चन आवर में दे नहीं देंगे। जयप्रकाश जी, औजला जी, आपका भी नाम ले रहा हूँ, आप सदन को व्यवस्थित करें। इससे साफ है
कि आप केवल प्ले कार्ड लाएंगे। इस सदन में देश के जनता की जो जवाबदेही है, आपकी अकाउंटेबिलिटी है जनता के लिए। जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आपकी मांग मान ली, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मान लिया, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कह दिया कि माननीय गृह मंत्री जी चर्चा का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, तो आप चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं। जब चर्चा का उत्तर देने के लिए गृह मंत्री जी तैयार हैं तो आप चर्चा करिए। नहीं, आप क्या कर रहे हैं? जब सरकार ने कह दिया कि माननीय गृह मंत्री जी इस सदन में जवाब देंगे, तो मैं कहता हूं चर्चा करने के लिए तैयार होइए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी माननीय सभी दल के नेताओं के द्वारा वहां पे संसदीय कार्य मंत्री। फिर सभा की कार्रवाई कल मंगलवार दिनांक 11 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। यह होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन सर। और उसी प्रकार से यूपीआई को देखें सर, उसने तो क्रांति पूरे देश भर में ले आई। देश नहीं, मैं कहूँ तो यह क्रांति पूरा विश्व भर में ले आई सर। यूपीआई के माध्यम से अगर देखें सर, 3,14,000 करोड़ रुपए एक साल में ट्रांजेक्शन हुआ है, इतने रुपए का ट्रांजेक्शन। और स्थिति यह है कि आज यूपीआई प्लेटफॉर्म केवल भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना है, तो यूपीआई बन गई सर। इस बिल के माध्यम से यह कहा गया है कि चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, चाहे डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे वर्चुअल फॉर्म में डाटा हो, क्लाउड बेस्ड फॉर्म में हो, वो सभी को एविडेंस के रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा। उसी के साथ साथ 1 मिनट में सर, यह इस बिल के माध्यम से जहां हमने जब बैंकों को बैंक बुक को डिफाइन किया, उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि वह बैंकिंग और उससे एलाइड जो अन्य संस्थाएं उनको भी डिफाइन कर सकता है कि यह भी बैंकिंग के जैसा इनके साथ भी बर्ताव होगा। और उसी के साथ साथ सर जो कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया में भी पहले जो कोर्ट थे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अलग अलग जजमेंट देते थे, इसमें इस बिल के माध्यम से इसका भी सुधारा गया है सर। इस प्रकार से एडमिशन भी जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा उसको बाध्य माना जाएगा, चाहे साइबर क्राइम हो चाहे अन्य क्राइम। मैं पुनः आदरणीय वित्त मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। यह बहुत ही क्रांतिकारी सुधार लिया गया है। मैं कह सकता हूं कि विकसित भारत के संकल्प में यह एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, इसका समर्थन करता हूं। श्रीमती राजाथी जी प्लीज। வணக்கம் சார். இந்த வங்கிகள் குறித்த பில்லில் புதிதாக
பேசுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை. முதல்ல பேப்பரில் இருந்த விஷயங்கள் இன்றைக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அத்தனையும் டிஜிட்டலைஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு நம்முடைய ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் அவர்கள் நம் முன்பாக வந்து இந்த விவாதங்களுக்கு பதில் சொல்வதற்காக அமர்ந்திருக்கிறார்கள். மகிழ்ச்சி. அதே போன்று நம்முடைய உள்துறை விவகாரங்களில் மாணவர்கள் போராட்டம், மாணவர்கள் மீதான கடுமையான தாக்குதல் பற்றி பேசுவதற்கு ஏன் நம்முடைய உள்துறை அமைச்சர் வர மறுக்கிறார்? You are not interested in speaking on the bill. That will not go on the record. You speak on the bill, only that will go on the record. No, it will not go on. Shri Manas Ranjan Mangraj. Shri Manas Ranjan Mangraj, please. Honorable Deputy Chairman, sir, I rise to speak on the Bankers' Books Evidence Bill 2026. At the outset, I support the objective of this bill. As banking has become increasingly digital, our legal framework must also be updated. Today, banking records are maintained electronically, and the law should recognize this change. Sir, however, I would like to make a few suggestions. First, data security and privacy must be given the highest priority. Banking records contain sensitive personal and financial information. The government must ensure strong safeguards to prevent misuse, unauthorized access, and cyber threats. Second, the authenticity of electronic records is very important. Courts must have confidence that digital records are genuine and have not been altered. Proper standards for certification, storage, and audit trails should be put in place. Third, capacity building is essential. Judges, investigative agencies, bank officials, and enforcement personnel should receive adequate training to handle electronic evidence effectively. Sir, we must also remember that not every part of the country has fully adopted digital banking. Many people in rural and remote areas still depend on traditional banking systems. The implementation of this law should not create difficulties for them for smaller financial institutions. This bill should strengthen public confidence in the banking system while ensuring transparency, security, and fairness. With those observations, I support this bill. Thank you, sir. Thank you, Manas Ranjan ji. Manisri S. Niranjan Reddy. Thank you, sir. So my party and I rise to support the bill. The bill seeks to update an old existing law, tries to make it technology neutral. So we understand the reason for this bill being made, but there's one concern I wanted the Honorable Finance Minister to consider. Providing for a statutory form is very salutary because now there will be one standardized form, sir. But the statutory form requires the officer giving this particular certification to indicate about and certify about the integrity, and in a cloud and in the computer mechanism that is operating, it may be difficult for one bank officer to certify the integrity. The bill thankfully has a provision where central government under clause 14 can issue an order to obviate the difficulties, sir. Otherwise, a bill intended to protect the banker and not to disturb them from their regular actions can tomorrow become a problem area. I'm just bringing this to the notice of the Honorable Finance Minister. Sir, second, now this is a slightly larger issue, not just in relation to the bill. I fully understand, sir, why the bill in clause 4 says that this may be applicable to any class of persons operating in the financial sector. So it will be impossible to categorize today because technology is moving so fast that we could have new classes coming up tomorrow. I understand the reason for having this dynamic approach. So this is an area where we as parliamentarians have to now start thinking more seriously. Sir, we will not be able to come back to the parliament each time for making a new law the moment there's a change in technology or an application. So we may have to entrust this responsibility on delegated legislation. But then this creates a problem that if this is going to be excessive delegation, what is going to be the parliamentary supervision? Sir, our standing committees
our subordinate legislation committee are all conceived back in the day when there was no necessity of doing this. Sir, I call upon the chair of this house and maybe the Loksabha, sir, we may have to come up with some scheme where we'll have to give flexibility to the government to have this delegation. Sir, just 1 minute, it's a very important issue. Sir, this is not about this bill, it's going to come in many matters. And since many people have walked out, Please take your time. Yes, Yes, sir. please. Sir, we may have to come up with a mechanism where we may have to give flexibility and elbow room to the government to ensure that they make these changes very quickly. Otherwise, what happens, sir, is we will not be competitive as a country, we will fall behind. But when we have to do this, we will not be able to come back to Parliament to make a law each time. Delegation is necessary. But what is the parliamentary supervision? Sir, the House may have to come up with some mechanism for ensuring that a committee on subordinate legislation works better. Sir, last point, I compliment the government that they have defined just cause, because this is an improvement on the old act, and this is contrary to what I was saying, sir, that this is what the bill needs to provide, because just cause is defined, the courts will not be able to use it at their whim. Thank you so much, sir. Thank you. Dr. M. Tambi Duraiji. Time I have to, what are the time I have? 1 minute, sir. Huh? 1 minute. Sir, Honorable Deputy Chairman, sir, 1 minute. Sir, you are enough capable to tell. in 1 Right minute. to speak on the bankers' Sir. books evidence bill 2026 on behalf of my party, ADMK party, and my leader, Edapadi Palaniswamy. I appreciate the Honorable Finance Minister as taking all the efforts to fulfill the Prime Minister's vision to modernize the everything. That is what I am appreciating her. So at the outset, I would like to appreciate God for this. Sir, the bill rightly explained this. Actually, the existing bill is Evidence Act was enacted in 1891. That is the act actually there. Now, the government has come forward by bringing out the new list, whatever the colonial rules are there. The objective of the government is to bring the new rules. I appreciate that. At the same time, the bill rightly expands the meaning of banker's book to cover not only physical records, but also electronic, digital, virtual, wrote, and at the same. Finally, sir, don't want much time. The cyber fraud, identity theft, unauthorized transaction, and manipulations of the digital records emerging challenges. Therefore, I urge the government to continuously strengthen the cyber security framework associated with the records. I also welcome and appreciate the Honorable Minister bringing this. I support this bill, sir. Thank you very much. Thank you, Tambi Duraiji. माननीय श्री राजेंद्र हीरालाल जैन. माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उपस्थित हुआ हूं. कानून तभी जिंदा रहता है जब वो समय के अनुसार अपने को बदलता है. 1881 का कानून 2026 के डिजिटल भारत बैंकिंग व्यवस्था के साथ न्याय नहीं कर सकता. इसलिए आदरणीय वित्त मंत्री महोदय और हमारी सरकार ने इस कानून को लाया है. जिस समय कानून बना था उस समय न कंप्यूटर थे, न इंटरनेट थे, न मोबाइल बैंकिंग थी, न डिजिटल हस्ताक्षर थे. आज स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है. भारत दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई का संचालन कर रही है. सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वित्त 2024-25 में 221.67 बिलियन से अधिक रिटेल डिजिटल भुगतान लेन देन यूपीआई की हिस्सेदारी 81% रही. ये हमारे देश के लिए गौरव की बात और एक उन्नति की बात है. आज इस विधेयक के माध्यम से जो न्यायालयिक परिस्थितियां हैं, न्यायालय बार बार बैंक के अधिकारियों को न बुला सकेगा. इससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित होगी और बैंक के कर्मचारियों का और ग्राहक का भी समय बचेगा. और जब समय बचेगा तो हमारे देश की जो प्रमुख योजनाएं हैं, जैसे मुद्रा लोन हो, पीएम एम्प्लॉइज गारंटी हो, एआईएफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्कीमें हैं, उन स्कीमों को ज्यादा समय मिलेगा और हम देश की उन्नति प्रगति में भाग ले सकेंगे. माननीय वित्त मंत्री महोदय, इस विधेयक के माध्यम से मैं एक बात को और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज के समय में हम ग्रामीण क्षेत्र में जो सहकारी बैंक चलाते हैं, वो सहकारी बैंकों के माध्यम से सबसे ज्यादा शासकीय स्कीम, किसानों को लोन और शासकीय स्कीम के माध्यम से हम भी हमारी जो सहकारी बैंक है ग्रामीण क्षेत्र की, उनका भी हम आधुनिकीकरण कर रहे हैं. लेकिन सरकार की तरफ से आप अगर उनको व्यवस्था देंगे
तो साहब आधा मिनट Please. जरूर आज दे सकते हैं आप जरूर हमारी बैंकें मजबूत होगी और बैंक यह विधेयक केवल बैंक का रिकॉर्ड का कानून नहीं, ये डिजिटल भारत, पारदर्शी न्याय व्यवस्था और आधुनिक वित्तीय तंत्र का कानून है। मैं सरकार को इस समयानुकूल पहल के लिए बधाई देता हूं और पूरे विश्वास के साथ इस विधेयक को समर्थन करते हुए सदन में इसे पारित करने का आग्रह करता हूं। धन्यवाद। माननीय श्री भाष्यम रामाकृष्णा जी। Deputy Chairman, sir, I rise to support the Bankers Books Evidence Bill 2026. Sir, this bill replaces a 135-year-old colonial law with a modern legal framework that recognizes physical, electronic, digital, virtual, and cloud-based banking records. It also provides a clear mechanism for certification of electronic records and clearly defines the circumstances under which banks may be required to produce records before courts. These are timely reforms in an era where India's banking system has become predominantly digital. కాలానుగుణంగా చట్టాలు మారాలి, కానీ ప్రజల విశ్వాసం కూడా అంతే బలంగా నిలవాలి. As we digitize banking, we must also strengthen cyber security, data privacy, and the protection of customers' financial information. Technology should make banking easier, but it should never make citizens more vulnerable to cyber frauds. సార్, ఆంధ్రప్రదేశ్ దృష్టికోణంలో ఒక విషయం ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావిస్తున్నాను. మా ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆధ్వర్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో రైతులు, మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాలు, మత్స్యకారులు, చిన్న వ్యాపారులు, యువ పారిశ్రామికవేత్తలు పెద్ద ఎత్తున డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ సేవలను వినియోగిస్తున్నారు. విశాఖపట్నాన్ని ఫిన్టెక్ హబ్గా అభివృద్ధి చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో డిజిటల్ లావాదేవీల భద్రత, ప్రజల వ్యక్తిగత ఆర్థిక సమాచార రక్షణ, సైబర్ మోసాల నివారణకు మరింత బలమైన వ్యవస్థను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలి. అలాగే డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ మోసాలకు గురైన సాధారణ ప్రజలకు త్వరితగతిన న్యాయం అందేలా ఫిర్యాదుల పరిష్కారానికి కాల పరిమితితో కూడిన వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాను. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో డిజిటల్ ఆర్థిక అక్షరాస్యత అత్యంత అవసరం. On behalf of Telugu Party, I extend my wholehearted support to the bill, sir. Thank you, sir. माननीय श्री संजय सिंह, not present. माननीय श्री रविचंद्र बद्दी राजू। Thank you, sir. This Bankers Book Evidence Bill 2026. Sir, today I am going to speak about bill, sir. I am supporting this bill. Banking has changed a lot in recent years. Today, most banking work is done through computers and digital systems, sir. Bank keep important information in electronic form, such as bank statements, transaction details, and others, sir. This Banker Book Evidence Bill 2026 aimed to update the old law related to bank records, sir. The old law was made in 1891 when banking was mainly based on paper records. This bill is designed to recognize modern electronic bank records in legal proceedings, sir. Sir, this is important because digital records are now normal part of our daily banking. If a bank record is needed in a court case, sir, electronic records can help provide information quickly and easily, sir. So this bill can also reduce paperwork and save time. It can make the legal process more convenient and suitable for today's digital banking system, sir. However, digital records must be kept safe, and banks should protect customer information from hacking, fraud, and other unauthorized access, sir. The accuracy and security of these records are very important, sir. In conclusion, sir, this Bankers Book Evidence Bill 2026 is an important step towards modernizing our banking and legal systems. It helps our laws keep pace with new technology, sir. Modern banking needs modern laws and strong security and public trust, sir. We are supporting this bill, sir. Thank you very much. Thank you, Dr. Vaddi Raju ji, Sri Vaddi Raju ji. माननीय डॉक्टर वी शिवादासन, not present. माननीय श्री एल के सुधीश,
Thank you, Honorable Deputy Chairman. On behalf of Desiya Murpogu Dravida Kalagam, I rise to speak on the Bankers Book Evidence Bill 2026. Sir, the original Bankers Book Evidence Act was 1891. At the time, banking was largely paper-based. Today, in 2026, banking has transformed. We have UPI, IPMS, NEFT, RTGS, mobile banking, internet banking, and core banking solution. Crore of transactions happen digitally every day. But there is a lot of fraud happening every day. That should be controlled, taken action. Therefore, I support the consideration and passing the Bankers Book Evidence Bill 2026. I hope this will bring greater efficiency, transferability, and speed in our legal and financial system. Thank you, sir. Sir, that in Tamil Nadu there is a issue, Kaveri and No, sir, Tamil it will Nadu. not go on the record. We are not discussing this issue. You know the rules, Sudheshji. Thank you. Srimati Mamta Thakur, not present. Mane Dr. M. Dhanpal, Honorable Dr. M. Dhanpal. Thank you, sir. Sir, I support the Bankers Books Evidence Bill 2026 on behalf of All India Anna Dravida Muneta Kalagam and my beloved leader, former Chief Minister Edapadi K. Padichami. Sir, I welcome the provisions ensuring admissibility of electronic records and safeguards against unauthorized alteration, tampering and cyber threats. I give some suggestions for this bill, sir. 1. Customer privacy should be protected through appropriate redaction and restricted access to unrelated financial information. 2. Standard electronic formats should be developed for producing banking records before courts. 3. Sir, the government may provide greater clarity regarding fintech and other financial sector entities that may be brought under the Act. Sir, these suggestions would make the legislation more secure, consistent and future ready. I support the bill and urge the Honorable Minister to consider the 3 constructive suggestions, sir. Thank you, sir. Thank you. Manya Dr. Jyoti Nagnath Bagmare. Honorable Deputy Chairman, sir, thank you for giving me this opportunity to express my views on Bankers Books Evidence Bill 2026. On behalf of my party Shiv Sena, sir, I rise here today to support the bill. So today the House is going to witness the historical moment, the end of 135 years old colonial British rule and the beginning of new revolutionary changes which make our country future ready. Sir, on behalf of our leader, Honorable Deputy Chief Minister of Maharashtra Eknath Shindeji, who is the torchbearer of women empowerment and started a very important scheme like Ladki Bahin and gifted the financial freedom to the women, I would like to congratulate Honorable Finance Minister Nirmala Sitharamanji. Sir, I think she is giving a very strong message of women liberation and women empowerment, not only to the country but to the entire nation. And I think, sir, she proved that चूल्हे चौके की चौखट से निकलकर नया इतिहास रचाती है, चूल्हे चौके की चौखट से निकलकर नया इतिहास रचाती है। भारत की नारी आज सिर्फ घर ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी चलाती है। मजबूत इरादे, अदम्य साहस, बुलंदियों को छूता मान है। मजबूत इरादे, बुलंद साहस, बुलंदियों को छूता मान है। अंतरिक्ष से लेकर अर्थव्यवस्था तक नारी शक्ति ही देश की शान है। Sir, I think this bill also reflects the larger vision of our Prime Minister, Honorable Narendra Modi ji. Sir, I think the technology had changed the way India banks, and this bill changes the way India proves. Sir, this is the real significance of this legislation. Sir, this bill is a bridge from 1891 to 2026, from paper to digital, from colonial era banking to future ready banking, and from digital transactions to digital justice. So let us not look at this merely as a replacement of an old rule. Let us see it as a statement of confidence in new India, and India that is digital, dynamic and ready for the future. With these words, I extend my full support to the bill, sir. Jai Shivraj, Jai Bhim, Jai Maharashtra. Thank you. Manya Shri Santosh Kumar P. Not present.
माननीय श्री शंभू सन पटेल जी। आपका बहुत बहुत आभार उपसभापति महोदय। आपने मुझे द बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 पर बोलने का अवसर दिया है महोदय। मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं महोदय। महोदय, देश की आर्थिक सुरक्षा और सशक्त बैंकिंग व्यवस्था केवल पुराने कागजों से नहीं बल्कि आधुनिक और अभेद्य डिजिटल कानूनों से बनती है। यह विधेयक अंग्रेजों के जमाने के 135 साल पुराने कानून से देश को मुक्ति दिलाकर डिजिटल इंडिया को कानूनी सुरक्षा चक्र देने का ऐतिहासिक काम करेगा। महोदय, हमारी केंद्र की भाजपा और एनडीए सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की तरक्की के लिए, राष्ट्र के लोगों के विकास के लिए और विकसित भारत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। महोदय, केंद्र सरकार विकास की गति को बनाए रखने के लिए देश के व्यापारियों, सरकारी कर्मचारियों, देश के नागरिकों की सुविधा के लिए अंग्रेज के जमाने के 1500 से अधिक कानूनों को हमारे सरकार ने या तो निरस्त किया है या उसमें बदलाव किया है महोदय। उसी की एक कड़ी में आज जो है ये बैंकर्स बिल जो है यह हमारी सरकार इस सदन में लेके आई है महोदय। इस बिल के आ जाने के बाद जो 135 साल पुराना कानून था बैंकर्स बिल का, वो आज निरस्त हो जाएगा महोदय। आज आजाद भारत का आजाद बैंकर्स के लिए आजाद बिल हम लोग को मिलेगा महोदय। महोदय, वर्तमान विधेयक बैंकर्स बुक की परिभाषा को विस्तार करते हुए बैंक के द्वारा सभी प्रकार के एविडेंस को इसमें शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल, वर्चुअल एंड क्लाउड आधारित एविडेंस के साथ साथ बैकअप एवं डिजास्टर रिकवरी केंद्र में सुरक्षित रखे गए एविडेंस भी शामिल है महोदय। आज के एआई के जमाने में जहां पूरी दुनिया बैंकिंग सिस्टम जो है डिजिटलाइजेशन हो गया है महोदय, और भारत आज यूपीआई, एनईएफटी और ये निफ्ट में और आरटीजीएस में रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है महोदय। वही आज नए बिल की भारत के आजाद देश के कानून के लिए यह बिल आवश्यक था महोदय। और इस बिल को आ जाने के बाद जो पहले जो सिर्फ बही खाता लेके हमारे बैंक के अधिकारी को अदालत का चक्कर लगाना पड़ता था महोदय, अब जो है आप डिजिटली जो है सारे एविडेंस को अदालत में रखा जा सकेगा महोदय। और जो दो कंपनियों के बीच में कभी कभी जो झगड़ा हो जाता था महोदय, उसमें एक पार्टी जो है किसी का पूरा बही खाता को अपने एविडेंस के रूप में मंगा लेता था, जिसके कारण उस कंपनी का पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है उसका डिस्क्लोज हो जाता था महोदय। अब बेवजह जो अदालत जो है बैंक के अधिकारियों को या बैंक या किसी कंपनी को या दो कंपनियों के झगड़ा में बैंकर्स को इन्वॉल्व करने के पहले उसको ऑफिशियली जो है उनको इन्फॉर्म करेंगे महोदय। और जरूरत होगा तभी बैंकर्स जो है उस बिल के ये एविडेंस को लेकर अदालत में जाएंगे महोदय। ये बिल तो बहुत महोदय 30 सेकेंड और बोल दूं महोदय। आज के इस मतलब 80 साल आज़ादी को होने जा रहा है महोदय, और इस 80 साल के आज़ाद जो हम वर्ष मनाएंगे महोदय, और इस बैंकिंग जो एविडेंस बिल है इसके पहले मात्र 2000 ईस्वी में जब हमारे हमारे प्रधानमंत्री पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के माध्यम से इसमें बदलाव किया गया था महोदय। अब समय आपने बहुत कम दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं महोदय। धन्यवाद। माननीय शंभू जी, पार्टी समय देती है, हमने तो अतिरिक्त दिया और बैठे। माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमन जी टू रिप्लाई द डिस्कशन। So thank you very much, sir. So actually, before I respond to the discussion points, these are the kind of bills on which the opposition should actually take interest and participate, sir. These are very reformatory. These are going to help the country to move forward fast. And these are steps on which no one can have a difference of opinion, except if they want to suggest improvements on it. So it's such a sad state, sir, that our opposition chooses to walk out on these kind of important debates. So you may remember, sir, Honorable Prime Minister, speaking from the Red Fort, had very clearly called for change in the mindset that is so required. He spoke about the Panch Pran
And one of the things that he had highlighted was get over the colonial mindset. So in keeping with that, I recall our senior member, Arun Singh Ji, also spoke about the number of laws that have been changed, number of regulations which have been simplified, and that helps in ease of doing business. But keeping in line with the Honorable Prime Minister's advice that all the colonial laws which were written for the subjects of the Queen or the King will have to now be changed so that we give ourselves a citizen-centric facilitating act rather than one for the subjects of a royalty or the imperial force. So in that light, when we looked at the Bankers Books Evidence Bill, it is 1891 of origin. So also the way in which it had included instruments related to banking which were relevant for that period, which were largely paper-based. Whereas India has shown exemplary speed in digitizing its economy. So the instruments with which you are able to do your banking activities, your financial transactions, have all now become so phone-driven. Each customer or each bank business holder is in a position to do everything that they want to do with a simple button pressing in the phone itself. So the related aspects of doing business through a bank, commercial operations, also will have to catch up with that kind of a digitization in the financial inclusion area, financial sector. Therefore, the Bankers Books Evidence Act in 1891, which was a legislation which was paper-based, as I said, and everything depended on certified copies of bank records as evidence in legal proceedings. So if somebody had a problem transacting money from one account to another and there was a legal dispute, the bank is not a party, but even then the bankers are called to appear before the court. Or the bankers are asked to appear before the court with papers of the original transaction and so on, which also has a problem of privacy. However, at that time in 1891, this was used for legal proceedings also. But with the advent of digital and electronic record keeping, there was a necessity for bankers to be given the power to say, why not the certified copies in the courts rather than get the electronic records, which is sheer impossible. You're carrying a system, even the system which can come on your phone is not accepted as otherwise based on the 1891 Act. Therefore, the Bankers Book Evidence Act 2026, Evidence Bill 2026 is being brought before this House. We seek to repeal and replace the Bankers Book Evidence Act of 1891. Just for a moment, sir, to say, is this allowed by law? Yes, it is allowed by law, because entry 45 in the Union list, which is the list 1 of the 7th schedule to the Constitution, empowers the Parliament to repeal and re-enact an act. We are invoking that and repealing the 1891 Act and bringing in the Bankers Evidence Bill, Bankers Books Evidence Bill of 2026, which will replace the repealed 1891 Act. So the bill, among various other things that it wants to do, provides for provides for a technology-neutral legal framework for bankers' books. It recognizes electronic and digital banking records. It standardizes the certification process, facilitates the admissibility of electronic banking records. It permits authentication through manual, digital, and electronic signatures. It also, therefore, strengthens the statutory protection available to the bank officers where the bank is not a party to the proceedings by requiring the court to record the existence of a special clause, which is the feature in this new one. It
suggests to the court to record the existence of a special clause before summoning them or invoke a cause which is specialized for summoning them, empowers the central government to extend the applicability of the Act to specified financial sector entities and also aligns the law with the contemporary banking practices. Sir, this particular Act has about 16 clauses which provides for several specific provisions, all of which will allow for the digital records to be in the form of a certified copy, which can be admitted in the court of law. I highlight a few things. Explicit legal recognition is going to be provided if this House passes this passes this bill as an act. So explicit legal recognition of electronic records. So this particular clause provides that electronic or digital records of bankers' books shall be admissible, it shall be valid and legally enforceable as evidence subject to the conditions specified under the Act. So clauses 6 and 7 relate to that. Expanded definition of bankers' books is being brought in now. It expands the definition of bankers' books to include records maintained in written or physical form or stored in electronic or digital form or otherwise, either on-site or at off-site or virtual or cloud location, including backup or disaster recovery site. So that is the clause 2(1)(b) which we are bringing in now. Conditions for admissibility of electronic or digital records prescribes, this Act will prescribe, once passed, the conditions to be satisfied for the admissibility, validity, enforceability of electronic and digital records of bankers' books as evidence, with an enabling provision for the central government to notify such other conditions. Standardized certificates can also be prescribed. So this Act prescribes separate certificate formats for certified copies of bankers' books maintained in written or physical form or in electronic or digital form as specified in the first schedule and the second schedule respectively. So again, the central government may by notification modify the certificates and specify it in the rules. This is clause 3 and clause 12 read with the first schedule and the second schedule of the Act, sir. So this Act also will define the expression special cause, which I mentioned when I opened up the remarks. The special cause will be a part of this bill if passed as an Act. It will give the basis for summoning a bank officer to produce bankers' books or appear as a witness in legal proceedings to which the bank is not a party. There can be a case where two people are fighting, commercial case, the bank is not even a party. Today they are all being asked to come and stand before the court, which is their duty, they will do it. But is there a reason why they should be called in a dispute which is not involving the bank at all? So we are now giving a clause through which a special cause can be invoked by the courts, whereupon they can ask the bank to come and appear, even if it's not a party. And therefore, the evidence and everything, even if they're electronic, can be taken and that can be made applicable. Sir, so the special cause can be invoked. I also, in this context, understand, and also the points which I mentioned a bit earlier, appreciate the point made by Sri Niranjan Reddy of the YSRCP about can there be a committee which therefore authorizes instead of the, every time the government having to come to the parliament. Whilst I appreciate the point made, more than the ease which provides it for the government will not hesitate to come before the House to seek
their approval and be accountable to the House. So the point which you have made is well taken, Honorable Member, but I would like to assure that the government will be happy to come and stand before the House to explain. So I think, sir, largely every member has spoken, understanding the importance of this act, which is being brought in this context. I particularly thank Sri Rajendra Jain of the NCP, who appreciated the digitization efforts which are being undertaken, and therefore an act of this nature is important, and also for his extending his party's support. Similarly, Sri Vaddiraju Garu from the BRS for supporting this bill. I also thank DMDK's member Sudesh also extending the support, and Shiv Sena's Jyoti Vagmareji for also extending her support for this bill. I particularly thank senior member Sri Thambiduraiji for taking this whole thing in a very positive context to see the importance of such amendments which are continuously being undertaken by our government. So I thank Sri Thambiduraiji, particularly when he speaks about the cyber security related aspects, and TDP's Bhashyam Ramakrishnaji, who's a new member, but who has spoken about the importance of digital amendments which are coming through. Sir, there is just one point which I want to highlight. Member Dhanapal of AIADMK seeks clarification on clause 4 to extend the provision to other financial sector entities. So the banking and financial sector has evolved significantly in this country over the past few decades, with the emergence of NBFCs, payment aggregators, fintech companies, and other service providers having a pan-India presence. These entities perform an important role, sir, in fulfilling the banking and financial needs of the common people. So it is therefore necessary that whenever and wherever required, they are provided a similar evidential framework. This, therefore, clause 4 enables the central government to act and to extend the act to other regulated financial entities through notification, ensuring that uniform evidentiary framework across all the financial sector is available. So, Sri Manas Ranjanji from BJD also spoke of data security, privacy to be given highest priority, also spoke about authenticity of electronic records for courts, and that we should strengthen public confidence. So the bill permits banking records to be produced either in physical or electronic form, as the case may be. So that is already being enabled through this new bill which is coming. The bill actually strengthens public confidence by providing a clear, secure, and transparent legal framework for the use of banking records in legal proceedings, while fully safeguarding the privacy and the confidentiality of customers. So largely, I think I've addressed most of the concerns of members. In case I've missed out on anything, I'm sorry, I can always meet them in person and talk about it. So I'm grateful that you've given me an opportunity to reply for the debate. Honorable members, the question is that the Bankers Books Evidence Bill 2026 as passed by Loksabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 3 stands part of the bill. There is one amendment. Number 6 by Dr. V. Shivadasan. Dr. V. Shivadasan, not present. I shall now put clause 3 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 3 is adopted. Clause 4 stands part of the bill.
There are two amendments. Number one by Dr. John Britas. Are you moving the amendment? No, sir. Moving? Not moving. I understand that, yeah. Not moving. Dr. V. Sivadasan, number 7 by Dr. V. Sivadasan. Not present. Amendments? Not moved. I shall now put clause 4 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 4 is adopted. Clause 5 stands part of the bill. There is one amendment. Number 8 by Dr. V. Sivadasan. Not present. I shall now put clause 5 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 5 is adopted. Clause 6 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 6 is adopted. Clause 7 stands part of the bill. There are two amendments. Number 2 by Sriman A. Rahim. Not present. Number 9 by Dr. V. Shivadasan. Not present. I shall now put clause 7 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 7 is adopted. Clause 8 stands part of the bill. There is one amendment. Number 3 by Sriman A. Rahim. Not present. Amendment not moved. I shall now put clause 8 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 8 is adopted. Clause 9 stands part of the bill. There is one amendment. Number 10 by Dr. V. Shivadasan. Not present. Amendment not moved. I shall now put clause 9 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 9 is adopted. Clause 10 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 10 is adopted. Clause 11 stands part of the bill. There is one amendment. Number 4 by Sriman A. Rahim. Not present. Amendment not moved. I shall now put clause 11 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 11 is adopted. Insertion of new clause 1A. There is one amendment. 11A. Insertion of new clause 11A. There is one amendment for insertion of new clause 11A. Number 5 by Sriman A. Rahim. Not present. Amendment not moved. Clauses 12 to 16, the first schedule and the second schedule stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 12 to 16, the first schedule and the second schedule are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Srimati Nirmala Sitharamanji to move that the bill be passed. Sir, I rise to move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Honorable members, now next business, statutory resolution and the taxation and other laws amendment bill 2026. Dr. John Britas to move the following resolution, that this House disapproves of the income tax amendment ordinance 2026 number 2 of 2026 promulgated by the President on 5/6/2026. Please move the resolution. Sir, this House disapproves of the income tax amendment ordinance 2026 number 2 of 2026 promulgated by the President on 5th June 2026. Sir, my motion is on the premise that
They promulgated the ordinance on 5th June, and there was a retrospective effect from 1st April. The Parliament was to start functioning from 28th, the monsoon session. There was no hurry at all. And their intention was that those investors who have gone away from India would come back if they are given that much of dividends, in the sense tax exemption. That means what all they contemplated as part of their budget utterly failed. And they thought that by bringing an ordinance, they can arrest the situation. And moreover, the minister has said that evolving geopolitical developments and also to attract stable foreign investors. So the government has to admit on the floor of the House, they have miserably failed. Sir, I have 3-4 minutes, please. Now, what they have done, see, actually they have taken the Parliament and the nation for a ride. Now, in order to convert this ordinance into a law, they have brought a bill that is encompassing many other aspects which were not part of the ordinance. One of the cardinal things which they have actually brought in as part of the bill is that taxing the people in the form of UPI. Those who are using UPI, there is a merchant discount rate that is going to be imposed. And the minister has been trying to explain that, no, this is not for those people who are part of the UPI. 54 crore people are part of these UPIs. Sir, you and me were asked to go to be part of the digital empire. Demonetization happened. They have. Sir, be brief. It's my right. Brief. I will be brief. Yes, you are right. Yeah. You are right. I agree. Be brief. And they wanted all the people to be part of the digital currency system. And after we all went voluntarily as part of the UPI, now they say that they are going to bring in MDR. The minister, very conveniently, she is charming enough to, at least convince a section. I'm talking about you, madam, positively. Now she says that, look, this burden is going to be only for the merchants. Can she explain? Is there any burden that has been imposed on merchant, not passed on to the consumers? Anywhere in the world? Thank you. Anywhere in the world. So no, sir. Please, Now, please. sir, now you know what is the volume. You have to be brief. Sir, You have right, but I know, but sir, please understand, I have a right. Yes. There is a precedent of giving 5 to 7 minutes. Please give me 3 minutes. Sir, you know what is the volume? Per annum, 340 lakh crore is part of this UPI system. Means huge amount. Like to America is part of this UPI. You will get again opportunity. Sir, no, sir, please understand. Yes, sir. Please be brief now. Please don't give me that opportunity. Let me use this opportunity. Now, see, what did the Prime Minister say in G23? The Honorable Prime Minister said, we will not impose any charge on this UPI system. This UPI system, this will not be a burden for the people. Now, indirectly, the minister want to impose a tax on the hapless people who went to part of this digital empire. Thank you, Janataji. Sir, please. Thank you. No, you already taken 2 points more. 2 points more. Be brief. I am brief. I am brief. Sir, now the Reuters estimated that transaction about 2,000 rupees account to around 4% of the merchant payment volume. But, sir, that means 67% of the value. So a 2,000 threshold which she is talking about sounds narrow, but it can still bring lot of money, means misleading the people. Sir, I am brief. Sir, there are honorable petroleum ministries here. I need to, involve him also. There are 1 lakh petrol pumps in this country. If you add the private pumps, 1,25,000 petrol pumps in this country. Imagine that 2,000 rupees additional burden is for a petrol pump owner per day. Just, you know what is impact? 10,000 to 12,000 crore annually for the consumers. Thank you. Now you have moved. Sir, you have moved already. Very important. I am moving. Yes. So I feel that the Honorable Finance Minister is putting a huge
burden on this country, and there is no way the parliament should give a blanket approval to her. If she is interested, let she come with the clauses. You have made your point out. What is the charge for this category? Instead of taking a blanket approval, this is against the people. Resolution moved. It's moved. Yes. Moved. Resolution moved. I have moved the resolution, sir. Okay. Srimati Nirmala Sitharaman ji, to move a motion for consideration of the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. Please. Sir, with your permission, I rise to move that the bill further to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007 and the Income Tax Act 2025 and to amend the Finance Act 2026 as passed by the Loksabha be taken into consideration. आप बोलना चाहेंगे इस विषय or later on? So later on will be Okay. better. So motion moved. Honorable members, the statutory resolution and motion for consideration of the bills are now open for discussion. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Please, no cross talking. John Pitaji, please. Mani Shriman Samirul Islam. No cross talking. Talk. Shriman Samirul Islam, not Shriman Tarun Chog. Shriman Tarun Chog. Shriman Tarun Chog. माननीय सभापति जी, मैं इस बिल की सपोर्ट के लिए खड़ा हुआ हूं। जो राष्ट्र समय की चुनौतियों को पहचान कर अपनी नीतियों को समय के साथ आगे बढ़ाता है, वही राष्ट्र आने वाले कल की दिशा तय करता है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री बहन निर्मला जी ने जो बिल पेश किया है, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच की खुशबू आ रही है। ये विधेयक भारत को आगे बढ़ाने वाला, ये बिल ग्लोबल से लेकर लोकल तक हर क्षेत्र में निरंतर प्रगति करने वाला, चाहे वैश्विक मंच हो, भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा हो, हमारी अर्थव्यवस्था के मजबूत करने की बात हो, ये सभी इसमें इंक्लूड हैं। इस विधेयक के पीछे एक बहुत व्यापक और दूरदर्शी सोच है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनाई जाए, निवेशकों का भरोसा कायम हो, उद्योग, व्यापार और रोजगार को आवश्यक स्थिरता दे, भारत को आने वाले वर्षों के लिए एक मजबूत, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर एक कॉम्पिटिटिव अर्थव्यवस्था के रूप में तैयार करना। माननीय सभापति जी, मैं आज जो दुनिया के अंदर इस समय जो परिस्थितियां हैं, उसके अंदर ये केवल सरकार के लिए एक राजस्व जुटाने का माध्यम नहीं है। इसे अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को स्थिरता और आवश्यक समर्थन भी देना होगा। मुझे लगता है इस विधेयक की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आज की बदलती हुई परिस्थिति को समझते हुए टारगेटेड टैक्स एग्जम्पशन, रैशनलाइज कंडीशंस का रास्ता अपनाया गया है। माननीय सभापति जी, ये वह सोच है जिसे हम पिछले कई वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की आर्थिक नीतियों में लगातार देखते आ रहे हैं, और जिसका परिणाम है कि आज भारत 7.8% की विकास दर से आगे बढ़ रहा है, और आज मेरा भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है। और हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की चौथी आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा हुआ है। इसके माध्यम से जहां प्रोग्रेसिव अप्रोच होगी, पॉलिसीज में स्टेबिलिटी आएगी, ये एक भारत को आगे बढ़ाने वाला एक माइलस्टोन साबित होगा। ये बिल केवल एक टैक्स अमेंडमेंट्स नहीं है, बल्कि बदलती वैश्विक परिस्थिति के बीच भारत की इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमिक कंपटीशन को मजबूत करने का बहुत बड़ा प्रयास है। ग्लोबल ट्रेड, अविरोध और सप्लाई चेन अनिश्चितता के बीच स्टेबल, मजबूत और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली टैक्स रेजिम देना, ये आज की देश की जरूरत है। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और टैक्स में निश्चितता
रणनीतिक निवेश और बढ़े और देश आगे तरक्की करे। फाइनेंशियल एक्ट 2026 के बाद स्टेक होल्डर से मिले फीडबैक को शामिल करते हुए टैक्सेशन फ्रेमवर्क को और रैशनलाइज और सिंप्लीफाई किया गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग भारत केवल इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा मार्केट नहीं बल्कि ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का भरोसेमंद पार्टनर बन रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल सप्लाई चेन तेजी से बदल रही है। ऐसे समय में भारत लॉन्ग टर्म टैक्स निश्चितता और रणनीतिक जरूरत दोनों ही देश के लिए आगे बढ़ाना है। फॉरेन कंपनी और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को दिए जाने वाले कैपिटल गुड्स को और उसकी टूलिंग पर टैक्स एग्जम्पशन को 2030-31 से 2040-41 तक बढ़ाना, मैं समझता हूं ये एक दूरगामी कदम है। मैं वित्त मंत्री जी को इसकी बधाई देता हूं कि देश को तरक्की के लिए उन्होंने एक बड़ा रास्ता खोला है। इससे भारत का व्यापार, भारत का उद्योग, भारत का रोजगार तेजी से आगे बढ़ेगा। इससे इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म इंसेंटिव ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी के माध्यम से देश की तरक्की का रास्ता खुलेगा। ये एक इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम व्यापक होगा। मेरा सभापति जी आपके माध्यम से मैं इस बिल की सपोर्ट करता हूं कि डाटा सेंटर और डिजिटल इकोनॉमी के माध्यम से आज डिजिटल इकोनॉमी आज की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन है। इसलिए डाटा सेंटर्स के लिए टैक्स फ्रेमवर्क को प्रैक्टिकल और आज का बिजनेस फ्रेंडली बनाना ये देश की जरूरत है, जिसकी चिंता यहां की गई है। एलिजिबल फॉरेन कंपनी को डाटा सेंटर सर्विस प्रोड्यूस के लिए और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट हटाई गई, मैं समझता हूं ये एक लाल लतीफाशाही से जहां वित्त मंत्री जी ने निकालने का प्रयास किया है, वहीं ये भारत की ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा कदम बनने वाला है। इंडियन कंपनीज द्वारा लीज इंफ्रास्ट्रक्चर पर ऑपरेटेड डाटा सेंटर्स को फ्रेमवर्क में अकोमोडेट किया गया है। इससे कंप्लायंस बर्डन कम होगा और डाटा सेंटर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। FIIC को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लेना और उसके इंटरेस्ट इनकम और कैपिटल गेन पर टैक्स एग्जम्पशन दिया गया है। इससे इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में फॉरेन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। इससे बॉन्ड मार्केट को डीपन और इंडिया को कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम मजबूत होगा। भारत का इकोसिस्टम इससे बहुत ज्यादा मजबूत होगा। बैंक और इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी इस फ्रेमवर्क से एग्जम्पशन दिया गया है। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा कदम है। रफ डायमंड के माइनिंग, ट्रेडिंग, ब्रोकरेज, एग्रीगेशन और ऑक्शन के जुड़ी एलिजिबल फॉरेन कंपनियों को नोटिफाई स्पेशल जोन में टैक्स एग्जम्पशन दिया गया है। ये एक भारत का जो हीरा उद्योग है उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम है और इस एग्जम्पशन को अब 31 मार्च 2041 तक बढ़ाकर भारत के वित्त मंत्री जी ने देश की जो डायमंड इंडस्ट्री है उसको विश्व की डायमंड इंडस्ट्री में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है, जिससे निश्चित रूप से भारत ग्लोबल रफ डायमंड ट्रेडिंग हब बनेगा और मेरा भारत जो इस हीरे की मार्केट का हीरा बनकर सामने आएगा। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में अमेंडमेंट करके इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड्स में नोटिफाई करने की पावर को इनकम टैक्स एक्ट की स्पेसिफिक प्रोविजन से डी-लिंक किया गया है। इसका उद्देश्य आउटडेटेड स्टैट्यूटरी रेफरेंसेस को हटाना और फ्यूचर पेमेंट टेक्नोलॉजी के ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना है। डिजिटल पेमेंट लगातार इन्वॉल्व हो रही है, कानून को भी टेक्नोलॉजी के साथ इन्वॉल्व किया जा रहा है। सभापति जी, ये बिल मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लस कैपिटल मार्केट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चारों बिंदुओं को मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल मार्केट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको एक स्ट्रेंथन भी करेगा और एक बड़े पिलर के रूप में काम भी करेगा। टैक्स पॉलिसी को केवल रेवेन्यू कलेक्शन का इंस्ट्रूमेंट ना मानकर इकोनॉमिक ग्रोथ और आज की दुनिया के अंदर भारत को किस तरह आगे बढ़ना है उसकी ओर जोड़ना, मैं समझता हूं ये ऐतिहासिक फैसला है। लॉन्ग टर्म एग्जम्पशन इंसेंटिव का उद्देश्य टारगेट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, लार्जर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाना, ये अपने आप में भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय सभापति महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में
भारत आज समस्याओं से नहीं समाधान की ओर बढ़ रहा है, समाधान से अवसरों की ओर बढ़ रहा है और अवसरों से विकसित भारत 2047 के संकल्प की ओर बढ़ रहा है। विकसित भारत 2047 का संकल्प अब केवल सरकार का संकल्प नहीं है, यह संकल्प अब केवल किसी नेता का संकल्प नहीं है, यह आज संकल्प पूरे भारत का संकल्प बना है। आज 140 करोड़ भारतीय विकसित भारत 2047 के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और हर देश का युवा उस 2047 के विकसित भारत के प्रधानमंत्री के विजन को अपना विजन मानकर कदम दर कदम आगे बढ़ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है जब 140 करोड़ भारतीय एक संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो कोई भी चुनौती हमें विकसित भारत बनने से रोक नहीं सकती। विकसित भारत 2047 केवल लक्ष्य नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत के उज्जवल भविष्य के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखी गई एक आधारशिला है। भारत अब केवल भविष्य का इंतजार करने वाला देश नहीं है, भारत अपने भविष्य का निर्माण करने वाला देश है। और जब लक्ष्य विकसित भारत का है तो हर सुधार राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम बन जाता है। कराधान व अन्य विधियां संशोधन 2026 भी इसी व्यापक राष्ट्र निर्माण की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसलिए मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं और माननीय वित्त मंत्री बहन निर्मला जी को इस दूरदर्शी पहल के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। उनके इस प्रयास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प का पूरा होने का एक माइलस्टोन के रूप में देखता हूं, मैं इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर माननीय सदस्य श्री पी विल्सन, 5 minutes. Thank you, Chairman, sir. This Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 seeks to amend 3 acts: Amendment to Payment and Settlement Act 2007, Amendment to Income Tax Act 2005. Sir, shall I wait, sir? Honorable Finance Minister. Sir, I'll wait for Honorable Finance Minister, sir. नहीं आप बोलिए ना। Honorable Finance Minister is not माननीय here. वित्त राज्य मंत्री जी बैठे हैं। Yes. नहीं, माननीय राज्य मंत्री जी मौजूद हैं। Yes. Madam, I can see you. I can see you. Yes. Amendment to Income Tax Act 2025 and the last one is Amendment to Finance Act 2026. Honorable Vice Chairman, sir, certain provisions are going to really affect the poor people, middle class people and the common man. The power which the Union government wants to bring by virtue of this amendment under Section 10A of the Payment and Settlement Act 2007 is, it is going to completely collapse the digital payment structure which the country adopted recently. We are making payments through UPI, through GPay, through Paytm. In fact, in all shops like vegetable shops, tea shops, the flower vendor, now they have been adopted to this payment methodology, that is UPI. The government has been spending years together telling the people of India that you should go digital, use your phone, use UPI, do not carry cash. And India has moved towards the digital economy. In fact, even in Parliament canteen, when we go and have a cup of coffee, which they charge only for 10 rupees, I make payments only through UPI. Whereas my friends will be having more than 500 or 600 rupees, they may give it. But what I'm saying is, this type of payment, people have adopted to this type of payment. Now, the vegetable, as I said, the vegetable vendors accepted UPI, tea shop accepts UPI, small hotels accepts UPI, auto driver accepts UPI, and now all of a sudden, when UPI has become a part of Indians, you bring this amendment and now you are going to levy tax for the usage of UPI. Now what will be the tax which you are going to levy? We do not know.
Honorable Finance Minister has to tell this August House that this provision is not going to be used against the common man, the poor man, who is going to use it for a small amounts, this payment of electronic methods, and they should not be unnecessarily charged through this payment. Tomorrow what will happen? All along you brought them through this payment digital methods. Now we are reversing back to the cash methods. They will avoid this digital payments. So therefore, Honorable Finance Minister who has come to this house has to tell that how far they are going to use it against the common man. The next one, no doubt we are not going to oppose against the foreign contribution or foreign investment in India. But the Honorable Finance Minister has to say that how far this foreign investment which you are going to give an exemption to the tax, how it will create jobs to the persons in India, how far they are going to make a value additions, and how far the public money which is going to be given as an exemption is going to be benefited for the people of this country. So to that extent, and how far it will affect the employment also in our country, to that extent the Honorable Finance Minister has to tell us. Now the Honorable Finance Minister has come here. I would only say that Tamil Nadu is contributing about 9% to the national GDP. So our population accounts for about 6% of total population. In fact, for every investment of 1 rupee, we are getting only 26 paise. But what is the problem today Tamil Nadu is facing? Sir, the Karnataka government is going to construct a Meghalaya dam. Sir, in fact, the then Chief Minister, Mr. M.K. Stalin, he wrote a letter on 4th of March 2026 requesting Karnataka government that not to construct the Meghalaya dam and ask for, I'll finish it, sir, I'll finish it. I'm coming in the point of tax only, sir. 30 minutes. Sir, I will conclude, sir, with respect to the tax. Sir, he has written letter and he has asked for a constitution of a tribunal. Sir, till today, the tribunal has not been constituted. Sir, when Tamil Nadu people are paying taxes to the union government, what is the difficulty in constituting a tribunal, sir? After all, they are asking for a constitution of a tribunal to solve this Meghalaya issues. When this tribunal is constituted... Next speaker, माननीय सदस्य श्री सुभाषिष खुंटिया. सर माइक सर. Jai Jagannath. Thank you, Vice Chairman sir, for giving me the opportunity to speak on the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. Sir, सरकार ने जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी को ऑर्डिनेंस का आधार बताया, लेकिन इसी बिल में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डायमंड और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए 2040 और 41 तक के लॉन्ग टर्म टैक्स बेनिफिट्स दिए गए हैं. यदि आवश्यकता तत्काल थी तो लाभ इतने लॉन्ग टर्म क्यों? क्या ऐसे रिफॉर्म्स पार्लियामेंट के रेगुलर लेजिस्लेटिव प्रोसेस से नहीं लाया जा सकता था? सरकार ने टैक्स एग्जेम्पशन दिए हैं, क्या आकलन किया गया है कि इनसे कितना इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट और रेवेन्यू फॉरगन होगा और इंडियन इंडस्ट्रीज तथा एमएसएमईज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर, क्लॉज 2 के तहत सेक्शन 10A में बदलाव किया गया है. पहले इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट मोड पर चार्ज नहीं लगाया जा सकता, अब सेंट्रल गवर्नमेंट मोड्स नोटिफाई करेगी. क्या नॉन नोटिफाइड मोड्स पर चार्जेस लगाया जा सकेगा? डाटा सेंटर्स को टैक्स बेनिफिट्स दिए गए हैं, लेकिन इनमें पानी और बिजली की व्यवहार बहुत अधिक होती है. क्या वाटर स्ट्रेस्ड क्षेत्रों में इनके एनवायरमेंटल इंपैक्ट का असेसमेंट किया गया है? सर महोदय, मैं उड़ीसा से आता हूं. श्री नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में उड़ीसा ने इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंगल विंडो क्लियरेंस, एमएसएमई प्रमोशन और पॉलिसी स्टेबिलिटी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट आकर्षित किया. उड़ीसा को सरप्लस स्टेट बनाया और नीति आयोग के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में रैंक 1 हासिल किया. एफआईए मुख्य पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो, इससे लिक्विडिटी बढ़ती है, लेकिन फैक्ट्रीज
एमएसएमईज और एम्प्लॉयमेंट स्वतः नहीं बढ़ती, क्या सरकार ने इन इंसेंटिव्स के वास्तविक इंपैक्ट का आकलन किया है? ट्रीटी शॉपिंग और राउंड टिपिंग रोकने के लिए क्या सेफगार्ड्स है? अंत में हर टैक्स इंसेंटिव्स के साथ रेवेन्यू इंपैक्ट स्टेटमेंट पार्लियामेंट के सामने रखा जाए, इंडिपेंडेंट रिव्यू हो और इंडियन एमएसएमईज, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, एनवायरनमेंट तथा इंडियन इन्वेस्टर्स को समान पॉलिसी सपोर्ट मिले। टैक्स कंसेशन का उद्देश्य केवल फॉरेन कैपिटल लाना नहीं, बल्कि इंडियन इंडस्ट्री और हमारा युवाओं के लिए रोजगार को भी मजबूत करना चाहिए सर। धन्यवाद। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी सर। बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर माननीय सदस्य श्री एस निरंजन रेड्डी, 2 minutes. Thank you, sir. Sir, my party YSRCP and my leader Jagan Mohan Reddy joins me in supporting this bill wholeheartedly. There are 2 or 3 issues this bill seeks to achieve, sir, so we want to support the government. There's a concern that a lot of members have addressed about the UPI payments and they becoming chargeable. We take comfort that the government has clarified that there will be no UPI burden on the consumers. If steps are taken effectively, that should, I think, harbor any, I'm sorry, sorry, sir, it could take away any such concerns. Sir, I compliment the government that they are having a long-term manufacturing policy with regard to providing that for 40 years they will be having a particular mechanism in place. Sir, I may differ with some of the other members with regard to the requirement of foreign investment in India. India cannot progress without foreign investment. We need to do everything that is necessary for the purpose of bringing in foreign investment. I would therefore urge the government to take further steps, sir, for the purpose of ensuring that any obstacles are removed, because as and when the foreign investors would again start looking at India more positively and aggressively, we should have the rails for ensuring that these investments come in seamlessly. Thank you, sir. नेक्स्ट सदस्य माननीय डॉक्टर विक्रमजीत सिंह साहनी। Thank you. Mike. Thank you, Chair. At the monsoon session, this is my first contribution. At the very outset, I rise to wholeheartedly support the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. जैसे कि चाणक्य ने कहा है कि just as the bee collects honey without hurting the flower, so should a government collect taxes without harming the people. This bill is a modern and very productive legislative expression of that 2000-year-old wisdom. It may look a technical set of amendments, a schedule substituted here and there, a clause omitted, पर असल में ये बिल भारत की फिस्कल आर्किटेक्चर को ग्लोबल बनाने के लिए एक निर्णायक घड़ी है। सभापति महोदय, ये बिल 3 एक्ट्स को टच करता है। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, हमारा नया इनकम टैक्स एक्ट 2025, फाइनेंस एक्ट 2026। लेकिन इसके पीछे की भावना एक ही है, भारत को दुनिया के इन्वेस्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स, एमएसएमई के लिए ज़्यादा प्रेडिक्टेबल, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना। वर्षों से हमारी टैक्स पॉलिसी 1961 का जो पुराना बिल और ये जो चोर मचाए शोर, आज तो शांति है, इनके राज्य में लीगल एम्बिग्यूटी, आउटडेटेड क्रॉस रेफरेंसेस, ग्लोबल कैपिटल फंड मैनेजर्स choosing other jurisdictions over India. We have seen Singapore, we have seen Mauritius being used as a preferred. इंडिया का पैसा वहाँ पे बन रहा था, फिर इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाए और क्या क्या नहीं किया। अनसर्टनिटी दैट डिस्करेजेस लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग। आज जो हमारा यूपीआई ट्रांजैक्शन है वो जो 2015 में 2 करोड़ थी, आज 24,162 करोड़ को पार कर गई हैं। डिजिटल पेमेंट्स वैल्यू के मामले में 4,000 गुना से वृद्धि हुई। आज 700 से भी ज़्यादा बैंक
और 55 करोड़ से अधिक यूजर यूपीआई तक हैं। गवर्नमेंट को हर नए इस अमेंडमेंट में हर नए डिजिटल पेमेंट मोड को तुरंत मान्यता देने की ये शक्ति देता है ताकि कोई भी अगली क्रांति को कोई भी पुराना कानून रोक ना सके। मैं इसलिए वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। दूसरा, ये बिल दुनिया के फंड मैनेजर्स को भारत में बुलाता है। जैसा कि मैंने कहा कि ये पहले सारा बिजनेस सिंगापुर, मॉरिशस, दुबई चला जाता था। अब नए शेड्यूल से ये साफ नियम देता है कि भारत से काम करो और बेफिक्र रहो। तीसरा, ये बिल हमारे मैन्युफैक्चरिंग और डायमंड ट्रेडर्स को एक दशक का भरोसा देता है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की छूट अब 2040-41 तक और रफ डायमंड्स की सेल जो एक इकोनॉमिक जोन में है उसको 2000 कर पे छूट 2041 तक दी गई है, क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी 1-2 साल के भरोसे पर अरबों का निवेश नहीं कर सकती। चेयरमैन सर, टैक्स लॉज अलोन कैनॉट बिल्ड एन इकोनॉमी, विजन डज। Over the last 11 years, 12 years, under the leadership of Honorable Prime Minister Modi, India's tax and fiscal architecture have been transformed from an instrument of fear to instrument of growth. यूपीए सरकार के समय भारत की इनकम टैक्स 1961 60 साल से भी ज़्यादा पुरानी थी। 819 सेक्शन थे, 47 चैप्टर थे, 5,12,000 शब्द थे, 1200 प्रोविजन थे। अब क्या है, खाली 536 सेक्शन हैं। 47 चैप्टर की जगह देयर आर ओनली 23 चैप्टर्स नाउ, और शब्दों की संख्या भी आधी हो गई है। द सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन वॉज कैपिटल। यूपीए सरकार के समय फंड मैनेजर्स भारत आने से डरते थे और सिंगापुर, मॉरिशस जैसे देशों में फंड मैनेजमेंट बिजनेस का फायदा उठाते रहे। आज मोदी सरकार ने और मैडम निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में गिफ्ट सिटी ही एक देख लीजिए, आईएफएससी में 200 से अधिक फंड मैनेजमेंट एंटिटीज और 300 से अधिक फंड्स रजिस्टर हुए हैं हमारे गिफ्ट सिटी गुजरात में, जिनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट $23.5 बिलियन है। और उद्योग जगत का अनुमान है कि ये आंकड़ा 2030 तक $100 बिलियन तक जाएगा। दिस इज द फोरसाइटेडनेस एंड लीडरशिप। थर्ड, यूपीए सरकार के दौरान भारत का गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट दुनिया के सबसे बड़े सॉवरेन डेट मार्केट में होकर भी वर्षों तक ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस में नहीं आया। ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस में हमारा बॉन्ड नहीं आता था। मोदी सरकार के प्रयासों से जून 2024 में भारत को जेपी मॉर्गन के गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट में शामिल किया गया। ये भारत के लिए गर्व की बात है। पहली बार हुआ जिससे भारत में 20 से 25 बिलियन डॉलर के फॉरेन इनफ्लोज आएंगे और महीनों के भीतर ही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने $20 बिलियन से अधिक निवेश कर दिया, क्योंकि अभी वित्त मंत्री ने एफआईआईज को लेके भी एक बड़ी राहत दी है कि अगर वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में यूपी सरकार के समय मोबाइल फोन भारत के सबसे बड़े इंपोर्ट आइटम्स में से एक था। हर मोबाइल फोन इंपोर्ट होता था। सेमीकंडक्टर जैसी कोर टेक्नोलॉजी में भारत कहीं नजर नहीं आता था। आज पीएलआई स्कीम के कारण मोदी सरकार में मोबाइल फोन प्रोडक्शन 33 गुना बढ़ी है। 18,000 करोड़ से जो है 627 करोड़ तक हो गया। मोबाइल एक्सपोर्ट्स 165 गुना बढ़े, 1500 करोड़। और जो सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 1,64,000 करोड़ के 12 प्रोजेक्ट किए। हमारे पंजाब में ही वित्त मंत्री जी ने सेमीकंडक्टर मोहाली को 4,500 करोड़ देके सेमीकंडक्टर लैब को मॉडर्नाइज करने का ऐलान किया। वाटर प्रोडक्शन कैपेसिटी को 100 गुना किया। ये अमेंडमेंट बिल मैन्युफैक्चरिंग एग्जम्पशन को 2040-41 तक बढ़ाकर इस मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर रेवोल्यूशन में एक रेवोल्यूशन लाएगा। अंत में
जो हमारे भारत दुनिया में 15 में से 14 डायमंड्स को कट करता है, और फिर भी रफ डायमंड ट्रेडिंग में हमारा सूरत डायमंड बोर्ड स्पेशल नोटिफाइड एरिया भी टैक्स अनसर्टेनिटी के कारण 60% रफ डायमंड दुबई और अन्य देशों में बाहर की कंपनियों को भेजा जाता था। लेकिन अब फॉरेन माइनिंग कंपनीज को जो स्पेशल नोटिफाइड जोन में रफ डायमंड निकालेंगे, बेचेंगे, उनको भी इस अमेंडमेंट बिल में 2041 तक टैक्स एग्जम्पशन देकर भारत को डायमंड कटिंग पॉलिशिंग हब ही नहीं बल्कि एक सच्चा ग्लोबल ट्रेडिंग हब बनाने का रास्ता खोल दिया गया है। सभापति महोदय, ये टैक्सेशन खाली अमेंडमेंट बिल नहीं है, ये मोदी सरकार की उस सोच का विस्तार है जो मानती है कि एक सिंपल, प्रेडिक्टेबल, ग्लोबली इंटीग्रेटेड टैक्स सिस्टम विकसित भारत की नींव है। 2014 से अगर मैं गिनाने चलूं, समय नहीं है कि कैसे कैसे टैक्स को रिड्यूस किया गया, पर्सनल को, हाउस होल्ड को, लो इनकम ग्रुप्स को, कॉरपोरेट को, सब में बहुत जो है उसको कम किया गया सहूलियत के लिए। जो कानून पहले फियर, क्रिमिनलाइजेशन, लिटिगेशन के प्रतीक थे, आज वही कानून ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट के माध्यम बन गए हैं। जो कैपिटल पहले भारत से बाहर जाता था, वो आज वो भारत में आने का रास्ता खोज रहा है। आज भारत की टैक्स पॉलिसी मजबूत ही तो है, भारत की इकॉनमी भी मजबूत है। टैक्स पॉलिसी सिंप्लीफाई होगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। सो टुडे वी आर नॉट जस्ट अमेंडिंग दिस historical income tax laws and various benefits inter alia available to our business and industry. We are building the fiscal foundation of Fixed Bharat. Jai Hind. Thank you. धन्यवाद। नेक्स्ट माननीय सदस्य डॉक्टर एम थम्बे दुरे, 2 minutes. Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. I support this bill brought by Honorable Finance Minister. Sir, this bill seeks to amend the Payment and Settlement System Act 9/2007, the Income Tax Act 2025, and the Finance Act 2026. It also seeks to replace the Income Tax Amendment Ordinance 2026 with the Act of Parliament. The government has stated that these measures are necessary in view of the global economic uncertainty, disruption, international trade and supply chains, and the need to provide great tax certainty, sir. I want to raise one point, sir. Honorable Minister, DMK Minister Honorable Monsoon spoke about criticism of this bill and also global investment said. I want to know from Honorable Finance Minister, during the DMK period, Stalin visited, former Chief Minister visited so many places, global event there. How much money brought for the investment here and benefited Tamil Nadu? Because he's a finance minister, he can explain that, what kind of thing they have done. Because during the DMK period, the whole economy of the Tamil Nadu gone very bad. Nearly 10 lakh crores of loan borrowed, crores of rupees, but the economic condition of Tamil Nadu is very bad condition. But he is criticizing certain things. And also same, sir, the aspersions he made. Because once he said, because some 5 rupees something is giving for getting coffee, but we are having 500 rupees. What about, he thinks about we are very poor, they are poor people, we are rich people. It's the aspersion of the members of other members. It's a member speaking about criticizing that this system and the digital system. He is telling about that other members having 500 rupees, 600 rupees like that. If you are said 50 rupees something you are telling, this is the way aspersion is making on the members being. Said it's a privilege I'm telling. You must not criticize the other members. You may be poor or rich, but how can you criticize other members? You are having so much of money, but he is having giving a small amount. This is the bill. You spoke about that. That is why I'm speaking. How can you criticize other members? Members' attitude always like this, sir. Thank you very much. धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री संजय सिंह जी, 2 minutes। धन्यवाद मान्यवर, आपने इस
महत्वपूर्ण बिल पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, मैं इस बिल के विरोध में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं और इस बिल का विरोध इसलिए कर रहा हूं कि आप इस बिल को अगर एक लाइन में कहना चाहें तो लौट के बुद्धू घर को आए वाला बिल है ये। मान्यवर, पहले आपने कहा डिजिटल इंडिया होना चाहिए, सारा व्यापार डिजिटली करिए, छोटे छोटे पेमेंट आप डिजिटली करिए। प्रधानमंत्री जी गर्व से कहते हैं वो चाय वाले हैं, लेकिन इस बिल के माध्यम से चाय वाला, सब्जी वाला, समोसे वाला, ठेले वाला, ऑटो वाला, टैक्सी वाला, रिक्शा वाला, सबका व्यापार आप चौपट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप इस बिल के अंदर? आप इस बिल में कह रहे हैं कि यूपीआई से जब आप पेमेंट करेंगे तो जो व्यापारी होगा, जो व्यापार कर रहा होगा, जिसके खाते में आप पैसा डालेंगे, उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। क्यों लगाएंगे आप टैक्स? छोटे छोटे व्यापार, सब्जी वाले पे, चाय वाले पे आप अतिरिक्त भार डालने जा रहे हैं। और देश के, अगर मान लीजिए आप उनके ऊपर भार डालने जा रहे हैं, वो किसी उपभोक्ता का रिश्तेदार तो है नहीं मान्यवर, घुमा फिरा के वो अपने सामानों का दाम बढ़ाएगा, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा, जिनके ऊपर टैक्स के बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ेगी। तो ये दो तरह से मार करने वाला टैक्स है, नंबर एक। दूसरी बात, ये बिल लाया किन परिस्थितियों में गया है, ये देश को जानना जरूरी है। 31 मार्च 2026 को जो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, यूएसटीआर, इसने आपत्ति जताई कि हिंदुस्तान में यूपीआई पर जीरो टैक्स की वजह से हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो ट्रंप के दबाव में भारत की संप्रभुता को गिरवी रख के ये बिल लाया गया है, इसलिए इस बिल के हम खिलाफ। मान्यवर, बहुत कम स्पीकर हैं, एक आध मिनट का समय मुझे और दे दीजिए। मान्यवर, आपका जो समय, विदेशी दबाव में भारत की संप्रभुता को गिरवी रख के आप ऐसा बिल ला रहे हैं जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स को तो आप टैक्स में 100% एग्जम्पशन दे रहे हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान में छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर आप टैक्स लगाने जा रहे हैं। खत्म कर रहा हूं सर, 30 सेकंड और दे दीजिए। मान्यवर, यह सरकार कहती है यूपीआई के पूरे सिस्टम को मैनेज करने में आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। अरे भैया, 27,000 करोड़ रुपए तो आपने सिर्फ मिनिमम बैलेंस चार्जेस के नाम पे 2 साल में देश के करोड़ों उपभोक्ताओं से ले लिया। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार से, ये बिल इस देश के आम आदमी के खिलाफ है, छोटे व्यापारियों के खिलाफ है। इस बिल के विरोध में अपनी बात कहते हुए अनुरोध करूंगा कि इसको वापस लिया जाए। माननीय श्रीमती महुआ माझी, नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री एल.के. सुधीश, नॉट प्रेजेंट। माननीय डॉक्टर कल्पना सैनी, 10 मिनट्स। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आयकर संशोधन विधेयक 2026 के समर्थन में इस सदन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। यह विधेयक केवल आयकर कानून में एक तकनीकी संशोधन नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक शक्ति, वित्तीय स्थिरता और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को सशक्त करने वाला एक दूरदर्शी सुधार है। माननीय उपसभापति महोदय, आज पूरी दुनिया आर्थिक अनिश्चितता, भू राजनीतिक तनाव और पूंजी के तेजी से होने वाले प्रवाह एवं बहिर्गमन का सामना कर रही है। ऐसे समय में भारत को एक मजबूत, स्थिर और भरोसेमंद निवेश गंतव्य बनाना अत्यंत आवश्यक है। यही कार्य यह विधेयक करता है। इस विधेयक के अंतर्गत 1 अप्रैल 2026 से विदेशी संस्थागत निवेशकों तथा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) को भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों पर मिलने वाले ब्याज पर 20% विद होल्डिंग टैक्स तथा पूंजीगत लाभ कर से छूट प्रदान की गई। इसमें भारत के सरकारी ऋण बाजार में निवेश की बाधाएं समाप्त होंगी और दीर्घकालिक विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। माननीय महोदय, यहाँ मैं कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सदन के सामने रखना चाहती हूँ। वर्ष 2004 में विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए भारत के सरकारी ऋण बाजार में निवेश की सीमा मात्र 175 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। वर्ष 2010 तक यह बढ़कर केवल 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर ही पहुंच सकी,
लेकिन उस दौरान विदेशी निवेश को आकर्षित करने वाली कर व्यवस्था में कोई बड़ा सुधार नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप भारत लंबे समय तक वैश्विक बॉन्ड बाजारों में अपनी पूरी क्षमता का लाभ नहीं उठा पाया। माननीय महोदय, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2020 में FAR प्रारंभ किया गया। इसके परिणाम स्वरूप भारत को JP मॉर्गन, JBI EM इंडेक्स, ब्लूमबर्ग EM लोकल करेंसी इंडेक्स तथा FISE रिजल्ट इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जैसे प्रमुख वैश्विक सूचकांकों को स्थान मिला। अब यह विधेयक भारत के लिए ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स में शामिल होने की संभावना को भी मजबूत करता है। इससे वैश्विक निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और भारत के सरकारी बॉन्ड बाजार को नई मजबूती मिलेगी। माननीय महोदय, इस सुधार का एक बड़ा लाभ यह होगा कि रुपया अधिक स्थिर रहेगा। जब दीर्घकालिक विदेशी निवेश बढ़ेगा तब विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे वैश्विक अस्थिरता के समय रुपये पर पड़ने वाला दबाव कम होगा और भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता मजबूत होगी। यह विधेयक केवल सरकारी प्रतिभूतियों तक सीमित नहीं है, इसका लाभ देश के उद्योगों और MSME क्षेत्र को भी मिलेगा। जब सरकार को विदेशी निवेश से अधिक पूंजी उपलब्ध होगी तब घरेलू बचत पर दबाव कम होगा और निजी उद्योगों के लिए सस्ता ऋण उपलब्ध होगा। इससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। माननीय महोदय, इस विधेयक का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सेवरिन ग्रीन बॉन्ड्स को भी इसका लाभ मिलेगा। इससे पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं में वैश्विक ESG निवेशकों की भागीदारी बढ़ेगी और भारत के हरित विकास अभियान को गति मिलेगी। माननीय महोदय, दस्तावेजों में यह भी उल्लेख किया गया है कि संस्थागत अनुमानों के अनुसार इस सुधार से अगले लगभग 1.5 वर्ष में 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का दीर्घकालिक वैश्विक निवेश भारत में आकर्षित हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह भारत की अर्थव्यवस्था, अवसंरचना विकास और वित्तीय स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आज विश्व भारत की ओर आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। ऐसे समय में यह विधेयक भारत की वित्तीय संप्रभुता को और अधिक मजबूत करेगा तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अंत में मैं माननीय वित्त मंत्री जी तथा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करती हूँ, जिन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों के माध्यम से भारत का वैश्विक निवेश का सबसे विश्वसनीय केंद्र बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आयकर संशोधन विधेयक 2026 का पूर्ण समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। श्रीमान राजीव कुमार, नॉट प्रेजेंट। श्रीमान प्रमोद बोरो, श्रीमान प्रभात मौर्य। थैंक यू सर। इस विधेयक में मेरा कुछ सुझाव है। मेरे पार्टी UPPL की तरफ से मैं ये बिल को समर्थन करता हूँ। ये वो बिल भारत के एक परिवर्तन लाने वाले बिल है सर। आर्थिक स्थिति में आने वाले समय में मेरा कुछ ही सुझाव है सर इस बिल में। I support the decision to provide exemption to foreign institutional investors and the Bank for International Settlements from taxes on interest as well as capital gain from investment in government securities, which at present is the tax at 20% and 12.5% respectively. However, I would like to urge the government of India to work towards simplifying the complex compliances frameworks faced by such investors from regulators. Sir, दूसरा point है sir, easing conditions for foreign cloud service providers. The decisions to remove the condition that only
those foreign companies notified by central government providing data center services will be exempted from taxes on income acquiring from procuring such service is a welcome step. Next, sir, I would like to urge the Government of India to develop an integrated framework for renewable energy infrastructure with the proposed creation of data centers to account for reduction in carbon emissions in the long term. Sir, my next point is providing tax exemption for key industries. The new bill extends income tax exemption for foreign companies supplying capital goods, tooling, and machinery to domestic Indian contract manufacturers, along with extension of exemption until 2040-41 is a welcome step. I would like to ask the government to consider calibrated implementation of such measures, just a second, sir, for labor-intensive sectors like textile, handicrafts, tourism, which contribute significantly to the employment. Thank you, sir. Next, Srimati Rekha Sharma. Sir, Mike. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. I rise in support of the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. Today, I do not wish to speak in sections, schedules, or complicated tax terminology. Laws are not only for the lawyers, chartered accountants, or tax experts. They are also for ordinary citizens who work in the offices, run small businesses, make investment, sets up factories, and honestly pays taxes. For me, the most important aspect of this bill is that our government, under the leadership of Prime Minister Modi, does not treat taxation merely a tool for revenue collection. Our tax policy is also economic policy, investment policy, and also employment policy. And ultimately, it is about common Indian who needs jobs, businesses, opportunities, and system where government is not an obstacle but a facilitator. So I want to make one thing very clear. Our earlier income tax was of 1961, old, redundant, and useless. The decades, the governance and taxation system carried an old administrative mindset, complicated laws, difficult language, too many conditions, too many approvals, and unnecessarily friction between taxpayer and the state. Under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, a major shift has taken place in recent years. The role of government is not to subject the citizen, but suspect the citizen, but to trust the citizen. What does the common citizen gain? Let me explain this in very simple terms. When investment comes into India, factories will be set up. When factories are set up, jobs will be created. When manufacturing grows, our youth will get opportunities. When infrastructure investment increases, roads, warehouses, commercial spaces, and projects like will expand. And when global companies choose India as their manufacturing and management base, then India will no longer remain just a market. India is becoming a global manufacturing and investment hub. That is the larger vision of this bill, making India a global investment destination. Earlier, eligible investment funds had many complicated conditions. How many investors must be there? How much one investor can invest? What should be the corpus, and in which entities investment can be made? There were multiple restrictions. This bill rationalized those conditions. This message is very clear.
If you are a genuine global investor and want to operate transparently, India welcomes you. We do not want to keep capital outside and count paperwork. We want capital to come, enterprises to come, employment to come, and growth to happen in India. Today, from mobile phones to semiconductors, the world is rethinking supply chains. India has a historic opportunity. This bill provides for exemptions under specified conditions for income related to foreign companies, places component in custom bond warehouses and supplying them to Indian contract manufacturers for electronic production for a period of 15 years up to 31st March 2041. In simple language, it means components will come to India, manufacturing will happen in India, and jobs will be created for our youth. This is not just a tax concession. It is a tool to connect Make in India with global supply chains. India is one of the largest diamond processing centers in the world. Our artisans cut and polish diamonds, but a large part of global rough diamonds trade has historically been routed through other international centers. Now, eligible foreign companies dealing in rough diamonds in special notified zones are being given exemption on specified income for 15 years up to 31st March 2041. Our objective is simple. The diamond processed in India should also be traded and valued from India. If Skill India is ours, then opportunity must be ours. Today, infrastructure is not built only through government budgets. This bill removes an anomaly related to dividend taxation for business trust unit holders. Even if a special purpose vehicle moves to the new tax regime, specified dividend income exemption will still be available to unit holders. This makes the taxation structure more rational and predictable. If rules change every day or interpretations keep shifting, investment will never come. Our government's principle is clear rule, stable policy, and predictable taxation. Today, India is globally recognized for UPI. From street vendor to large showrooms, QR codes have become a symbol of India's digital revolution. This bill updates Section 10A of the Payment and Settlement Systems Act 2007. Earlier, it referred to a specific section of Income Tax Act 1961. Now, the central government will have flexibility to notify electronic payments, payment modes where no charges can be imposed on payers or receiver by bank or system providers. In simple terms, the law is being made more flexible so that it can adapt to evolving digital technologies. Digital India cannot be static, and therefore, its laws can't be static either. Sir, it is not just a tax bill. I see this bill in 3 words: trust, certainty, growth. Trust in the taxpayers, certainty for the investor, growth for the nation. Sir, with this, I would like to again wholeheartedly support this bill and must congratulate Honorable Minister Nirmala Sitharamanji for getting this bill 2026. Thank you so much, sir. Sriman Santosh Kumar, not present. Sriman Ravi Chandra Vadiraju. Thank you, sir. Deputy Chairman, sir. Sir, I rise to participate in the discussion on the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026, sir. At the outset, I acknowledge that the bill seeks to provide a greater tax certainty, encourage investment, strengthening domestic manufacturing, and improve India's competitiveness as an investment destination, sir.
The proposed amendments relating to the foreign investment, electronics, manufacturing, and the taxation framework for REITs and INVATs are intended to remove ambiguities and improve the ease of doing business. However, while promoting investment is important, Parliament and must also ensure that tax reforms are equitable, transparent, and beneficial to the broader economy. Sir, PRS legislative research has consistently observed that the taxation laws should provide clarity, minimize litigations, and ensure the predictability for taxpayer. Frequent amendments through ordinance followed by the legislations, and should remain an exemption rather than the norm, because stability in tax policy is as important as the incentives themselves. Sir, my first concern is whether these incentives will translate into higher employment and manufacturing within India, particularly in states like Telangana, which have emerged as major centers for electronics, pharmaceuticals, IT, and advanced manufacturing. Tax concessions must be linked with the measurable outcomes in terms of investment, technology transfer, and job creation, sir. Secondly, sir, while the bill provides greater certainty to foreign investors and businesses, the government must ensure that domestic MSME are not placed at a competitive disadvantage. Our small and medium entrepreneurs continue to face compliance costs, limited access to finance, and market uncertainties. Tax reforms should equally simplify compliance for MSME, sir. Sir, I would also urge the government to provide periodic impact assessments of such incentives. Parliament should know how much revenue is foregone, how much investment has actually materialized, and how many jobs have been created because of these concessions. Finally, I request the government to ensure that states receive their fair shares of the benefits arising from increased investment. Telangana has consistently contributed to national growth in manufacturing, IT, and exports, and deserves equitably support in future industrial and infrastructure policies. Sir, with these observations, I hope the government will address these concerns while implementing the provision of the bill, sir. सर एक 1 मिनट सर, हमारा तेलंगाना में लिए टैक्सेशन के लिए भी देखा नहीं सर, जनता के लिए बहुत सारा स्कीम्स लगाया था सर, सिंगल विंडो सिस्टम सर, ग्रेनाइट में भी सब्सिडी स्लैब सिस्टम देके उनके इंडस्ट्री को बचाया सर. मैं मैडम जी को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, MSME के लिए थोड़ा सपोर्ट अच्छा चाहिए सर. ज़्यादा इस कंट्री में MSME इंडस्ट्रीज बहुत है, 45 करोड़ पीपल डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री MSME है. इसके बारे में आप एक बार कॉन्सेंट्रेट करना मैडम. और एक छोटा सा है सर, हमारा तेलंगाना में भी किसानों के लिए एंड इंडस्ट्री के लिए, MSME के लिए और ज़्यादा लोगों के लिए सब्सिडीज़ भी इंकरेज करके लैंड भी एलोकेट किए थे, सब्सिडी दिए थे, परमिशंस ईजी दिए थे, फ्री बिजली भी दिए थे, और इंडस्ट्री को सेव करने के लिए ज़्यादा लोगों को मेहनत करके और सपोर्ट करके गवर्नमेंट बाहर से भी इंडस्ट्रीज जाने वाले लोगों को भी इधर इंडिया में हैदराबाद में रखने के लिए हम बोरा रख दिया था. इसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट MSC पे करने के लिए बोल रहा हूँ सर. थैंक यू वेरी मच सर. इस बिल को सपोर्टिंग दिस बिल. थैंक यू. धन्यवाद उपसभापति जी, आपने मुझे टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 पर बोलने का मौका दिया है. मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हूँ सर. माननीय उपसभापति जी, कोई भी देश तभी मजबूत होता है जब उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, जब दुनिया भर का निवेश उस पर भरोसा करता है और जब उसका आम नागरिक सरलता से बिना डर के अपना कारोबार कर पाता है. आज जो विधेयक हमारे सामने है वह इसी सोच को आगे बढ़ाने वाला विधेयक है सर. सर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाना है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम दुनिया भर की पूंजी, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी और दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट इसको भारत की ओर आकर्षित करें. पिछले एक दशक में हमारी सरकार ने
टैक्स व्यवस्था को लगातार सरल बनाया है, टैक्स के जाल को कम किया है और निवेशकों को भरोसा जीता है, निवेशकों का भरोसा जीता है। जैसे सर 2014 से लेकर अब तक कई बार टैक्स में रिफॉर्म्स लाए गए हैं। 2014 से पहले पर्सनल टैक्स में जो टैक्स लगता था 2 लाख के ऊपर कोई भी इनकम होता था तो उस पर टैक्स लगता था। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री निर्मला जी ने उसको 12 लाख तक बढ़ाया है सर। एक परिवार में अगर 2 व्यक्ति काम करते हैं तो 12 लाख और 12 लाख 24 लाख जो टैक्स फ्री मिलता है, आप समझ सकते हैं कितना लाभ इस परिवार को मिलता होगा। कॉरपोरेट लॉज में भी, इनकम टैक्स में भी सरलता लाई है, कंपनी टैक्स में भी सरलता लाई है और यही कारण है सर कि जिससे आज भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है। सर ये विधेयक भी इसी यात्रा की एक और कड़ी है। यह हमारी सरकार की उसी सोच को आगे बढ़ाता है जिसमें कहा गया है कि नीति में स्थिरता और टैक्स व्यवस्था को सरलता और इन्वेस्टमेंट को भारत में इन्वेस्ट करने में कोई हिचक ना हो, इसके लिए विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। सर जब बाजार में किसी बदलाव की ज़रूरत महसूस होती है तो हमारी सरकार ने फाइलों में समय बर्बाद नहीं किया, तुरंत अध्यादेश के जरिए फैसला लागू किया और अब उसे संसद में विधिवत कानून का रूप दिया जा रहा है। सर इस विधेयक में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश से होने वाली इनकम पर टैक्स से छूट दी जा रही है। बहुत बड़ा बदलाव है सर। चाहे वो इंटरेस्ट इनकम सिक्योरिटीज़ चाहे वो इंटरेस्ट इनकम से हो या सिक्योरिटीज़ की बिक्री से हुआ लाभ हो, उसे टैक्स से एग्जम्पशन दिया जा रहा है। पहले इस पर सर 20% तक इंटरेस्ट टैक्स और 30% तक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता था। अब ये छूट 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। इसका सीधा फायदा यह होगा कि दुनिया भर की पूंजी इन्वेस्टमेंट भारत की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में और ज़्यादा भरोसे के साथ आएगा, जिससे हमारी सरकार को विकास कार्यों के लिए सस्ती दर पर कैपिटल मिल सकेगा और रुपये जो हमारा भारतीय रुपया है उसको भी मजबूती मिलेगी सर। महोदय सर, हमारे देश में सूरत जैसे शहर दुनिया के हीरे उद्योग की धड़कन है, जहां लाखों कारीगर परिवार अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। यह विधेयक अधिसूचित विषय क्षेत्र में कच्चे हीरों की बिक्री से जुड़ी विदेशी कंपनियों की इनकम टैक्स से मुक्तता कराता है सर, जिससे बड़ी हीरा खनन कंपनियां और व्यापारी भारत में ही अपना कारोबार केंद्रित करेंगे। हमारे विपक्ष के साथी भी कह रहे थे कि विदेशी इन्वेस्टमेंट जो होगी उसको टैक्स से क्यों निजात दी जा रही है और हमारी कंपनियों को क्यों टैक्स लगाया जा रहा है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण यही उद्देश्य है सर कि फॉरेन से ज़्यादा पैसे हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आए, हमारी कारीगरों को और काम मिलेगा। इसी तरह फ़ोन, लैपटॉप, सर्वर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियां, इनके लिए विदेशी पुर्जे जो कस्टम बॉन्डेड क्षेत्र में जो वेयर हाउसेस में और गोडाउन में रखे जाते हैं उनको भी इनकम टैक्स से छूट दी जा रही है सर। और ये सर 2041 तक ये पॉलिसी बनाई जा रही है। कोई भी पॉलिसी अगर 7-2 साल के लिए बनाई जाती है तो लोग इन्वेस्ट करने में हिचकिचाते हैं, लेकिन इसे 2041 तक ये पॉलिसी लागू करने से हमारे देश को बहुत बड़ा लाभ होगा सर। ये सब हमारी सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और मजबूत करता है। दुनिया भर की कंपनियां अब भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगी और इससे हमारे युवाओं को भी बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा सर। हमारी सरकार का मानना है कि जितने कम नियम कायदे होंगे उतना ही आसानी से कारोबार होगा। इस विधेयक में उन विदेशी इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए जो भारत से ऑपरेट होते हैं कई पुरानी शर्तें हटाई जा रही हैं। जैसे पहले था ऑपरेट करने में 25 सदस्यों की शर्त थी, एक निवेशक को सिर्फ 10% ही तक की सीमा थी, या 100 करोड़ मिनिमम कॉर्पस फंड्स, इसकी जो शर्तें थी ये सारी शर्तें हटाई जा चुकी है सर। यह सरलीकरण गिफ्ट सिटी जैसे हमारे अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सेंटर को और मजबूत करेगा और दुनिया भर के फंड मैनेजर अब भारत से ही अपना काम चलाने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे भारत में रोजगार और रेवेन्यू
दोनों में बढ़ोतरी होगी सर। सर, आज पूरी दुनिया डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है और डेटा सेंटर उसकी रीढ़ है। इस विधेयक में डेटा सेंटर से जुड़ा जो भी होगा उसे टैक्स एग्जम्पशन दिया जाएगा और जो पहले दिया गया था उसको और जनरस किया जा रहा है सर। सरकार से अलग नोटिफिकेशन की शर्त अब हटाई गई है और डेटा सेंटर किसी भारतीय कंपनी द्वारा किराए पर लेकर ऑपरेट किए जाते हैं उन्हें भी ओनरशिप राइट जैसे टैक्स में एग्जम्पशन मिल रहा है सर। इससे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट इसको वैश्विक केंद्र बन पाएगा, ये मेरा मानना है सर। सर, इस विधेयक को लेकर कुछ दिनों से भ्रम फैलाया जा रहा है। अभी भी विपक्ष के कुछ साथी बात कर रहे थे तो उन्होंने यूपीआई के बारे में बात की। सर, जब ये यूपीआई टेक्नोलॉजी यहाँ पे लॉन्च हुई थी तब हमारे कांग्रेस के पूर्व मंत्री, वित्त मंत्री, इन्होंने इसका मजाक उड़ाया था सर। उन्होंने कहा था कि भारत एक गरीब देश है, यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी कैसे चलेगी, यहाँ पे लोगों के पास मोबाइल नहीं है, लोगों के पास गांव-गांव में इंटरनेट नहीं है, छोटे रेडी वाले, पटरी वाले या छोटे छोटे सब्जी बेचने वाले, ये लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। लेकिन आज सर हमारे देश में तकरीबन 48 करोड़ लोग यूपीआई का यूज कर रहे हैं, 6.5 करोड़ व्यापारी इसका यूज कर रहे हैं, लगभग रोज 1 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन यूपीआई से हो रहा है सर। इससे ये कानून और ये बदलाव और ये यूपी टेक्नोलॉजी कितनी महत्वपूर्ण है हम समझ सकते हैं। लेकिन आज हमेशा की तरह विपक्ष के कई साथी संसद के अंदर भी और बाहर भी ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पर यूपीआई पर कुछ चार्ज लगने वाला है। मैं पूरी तरह जिम्मेदारी के साथ यह कहना चाहता हूं कि ये पूरी तरह गलत है, सफेद झूठ है। यूपीआई पे आम नागरिक के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, ये पूरी तरह मुफ्त है सर। महोदय, पहली की सरकारों में समय में टैक्स इतना उलझा हुआ था कि निवेशक भारत आने से पहले 10 बार सोचता था। आज उसको कंपेल्ड लॉज, अनस्टेबल पॉलिसीज, अनसर्टेन एनवायरनमेंट यहाँ पे भारत में नजर नहीं आ रहा है। पुरानी जो पहचान थी इसके विपरीत हमारी सरकार ने टैक्स व्यवस्था को लगातार सरल बनाया है, स्थिरता दी है और इन्वेस्टर्स को भरोसा दिया है कि भारत में नीति बदलेगी नहीं बल्कि समय के साथ बेहतर होगी। महोदय, यही भरोसा है जिसके कारण आज दुनिया भर की कंपनियां भारत की ओर देख रही हैं। आदरणीय सभापति जी, उपसभापति जी, यह विधेयक इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को मजबूत करता है, डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति देता है और साथ ही आम नागरिक के हित की रक्षा भी करता है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के उस विजन का हिस्सा है जिसमें भारत आत्मनिर्भर भी बनेगा और दुनिया के लिए निवेश का पसंदीदा ठिकाना भी बनेगा। मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक का समर्थन करें ताकि भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो, हमारे युवाओं को रोजगार मिले और विकसित भारत का सपना जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने देखा है उसे हम जल्द साकार कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का पूरी तरह समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Secretary General, message from Loksabha, Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Loksabha at its sitting held on the 10th of August 2026 passed the Tribunals Reforms Bill 2026. I lay a copy of the said bill on the table. Thank you. Sriman Vijay Sindhe Kahyala. Honorable Deputy Chairman, sir, I rise today to support the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 on behalf of the Telugu Desam Party. Mahoday, at first glance, this may appear to be a bill making changes to different tax provisions, but if we look at it more closely, there is one common idea running through all of them. Make India a more attractive place to invest, manufacture, manage capital, and build technology. And in today's global economy, Mahoday, that is not a small objective. Capital has choices, technology has choices, companies have choices. If India wants to become a developed economy by 2047, our tax system must not merely collect revenue, it must also create confidence, encourage investment, and enable growth. As Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has put it, reform to simply, perform to deliver, transform to impact. Mahoday, this bill is a reform designed to simplify, attract, and enable. Honorable Chairman, sir, this bill should be seen as part of much larger transformation in India's economic governance. Over the last decade,
India has moved from a system of complicated complaints towards a system increasingly based on digitalization, transparency, and ease of doing business. We have seen GST, we have seen the insolvency and bankruptcy code, we have seen gift city, we have seen faceless assessment and digital tax administration. The economic survey 2025-26 noted that income tax filings rose from 6.9 crore to 9.2 crore, while the share of direct taxes is total tax revenue increased from 51.9% to 58.2%. So the lesson is not that a strong tax system means a high tax burden. The lesson is the better tax system is one that improves compliance while making legitimate economic activity easier. Minimum government, maximum governance is the philosophy, Mahoday. I therefore place on record my appreciation for the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and Honorable Finance Minister Shri Nirmala Sitharaman ji for steadily moving India in this direction, Mahoday. And I would like to remind the words of Modi ji, as said, make in India, make for the world. I would add, invest in India, manage from India, manufacture in India, innovate from India. Okay, thank you. And last point, Mother. And there's, we are first in my bloodline. I'm seeing this Google Data Center AI Hub in Visakhapatnam. And this is done by our Honorable Chief Minister Chandrababu Naidu ji. And this will be useful for the renewable energy, fiber networks and everything. And as Pandit Deen Dayal Upadhyaya ji said, विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, and digital infrastructure is increasingly becoming one of the ways to take opportunity to that last mile, Mahoday. And I would like to, on behalf of our party, I would like to suggest one thing: investment in data must go together with security of data. So I would like to extend my wholehearted support to the taxation and other laws bill 2026. Thank you very much. Shriman Sanjay. Not present. Shriman Baburam Nishad. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपसभापति जी, मुझे आपने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। निश्चित रूप से जो विधेयक आया है, ये इसकी बहुत महती आवश्यकता थी, क्योंकि ये विधेयक देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला विधेयक है और पूरी दुनिया, पूरा देश की अर्थव्यवस्था से अवगत है। लेकिन ये विधेयक और आधार बनेगा इस देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में। निश्चित रूप से विदेशी निवेश को बढ़ावा देने वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को प्रोत्साहित करने वाला और भारत को आधुनिक डिजिटल एवं वित्तीय गतिविधियों का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। माननीय महोदय जी, आज दुनिया में निवेश वहीं जाता है जहां का कानून सरल हो, कर व्यवस्था स्पष्ट हो और व्यापार करना आसान हो। जब से ये मोदी सरकार आई है और हमारे भारत सरकार की वित्त मंत्री बहन सीतारमण जी वित्त मंत्री बनी है, लगातार हम यहाँ निवेश बढ़ता जा रहा है। कानून ऐसे पड़े थे जो उलझे हुए थे, लोग व्यापार करने में सरलता सहजता नहीं महसूस कर पा रहे थे, न कर पा रहे थे। और निश्चित रूप से जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश में ये व्यवस्था सुधरी है। आज दुनिया में हमारी सरकार का प्रयास है कि भारत में विदेशी निवेश आए, नई कंपनियां आएं, कारखाने लगें और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हों। ये संभव हुआ है जब हम सरकार के नाते कारखाने लगवाने के लिए व्यवस्था सरल की है और युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों पर रोजगार सृजन हुए हैं। 140 करोड़ का ये हमारा देश है। जब तक यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, तब तक आम जनमानस सहज रूप से काम करने में
सक्षम नहीं हो पाएगा। ये विधेयक इसी दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव करता है। पहला, विदेशी निवेश को बढ़ावा। सरकारी प्रौद्योगिकियों में निवेश करने वाला मात्र विदेशी संस्थागत निवेशकों और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट को मिलने वाले ब्याज और पूंजीगत लाभ पर छूट का प्रावधान किया गया है। इससे विदेशी निवेशकों के लिए भारत के सरकारी प्रतिभूति बाजार में निवेश करना अधिक आकर्षक हो सकता है। इसका लाभ हमारे वित्तीय बाजार को मिलेगा और भारत में विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा। दूसरा, भारत को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनाना। आज मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, सर्वर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुके हैं। निश्चित रूप से इस कानून के माध्यम से और इसके पहले भी इनको सरल किया गया है। लैपटॉप बन रहे हैं, फोन बन रहे हैं, सर्वर बन रहे हैं, लेकिन इस विधेयक के आने से और उपलब्धि हासिल होगी। मैं बधाई दूंगा सरकार को, बहन सीतारमण जी को। भारत चाहता है कि इन उत्पादों का निर्माण केवल विदेशों में ना हो, बल्कि बड़ी मात्रा में भारत में हो। इस विधेयक में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम करने वाली पात्र विदेशी कंपनियों को कर प्रोत्साहन दिया गया और इस सुविधा को आगे बढ़ाया गया। इससे कंपनियों को भारत में उत्पादन इकाइयां लगाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेश आएगा, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यही तो मेक इंडिया की भावना है। अगर ये सब सुविधाएं ना होती और मेक इंडिया का नारा आदरणीय देश के प्रधानमंत्री ने दिया, तो आज मैं कह सकता हूं कि यह संभव हुआ है कि आज मेरे देश में ढेर सारी वस्तुएं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान जो बन रहे हैं और विदेश में उसकी डिमांड बढ़ी है। निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक कदम है हमारी देश के सरकार का। भारत का हीरा उद्योग पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखता है। विधेयक में मात्र विदेशी हीरा कंपनियों को कच्चे हीरे की बिक्री से जुड़े कुछ आय पर कर छूट देने का प्रावधान किया गया है। इससे भारत में हीरा व्यापार और उससे जुड़ी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। आदरणीय चेयरमैन सर, सिर्फ आधा मिनट। चौथा, डेटा सेंटर, क्लाउड क्षेत्र को बढ़ावा। माननीय अध्यक्ष जी, आज के समय में डेटा ही नई ताकत है। आज हमारा युवा, आज हमारे देश में मोबाइल बैंकिंग से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर डिजिटल सेवा के लिए डेटा सेंटर की जरूरत होती है। ये विधेयक डेटा सेंटर से संबंधित कुछ जटिल अनुमोदन की शर्तों को सरल करता है। तभी तो इस देश का युवा, माताएं और बहनें, किसान, नौजवान डेटा से जुड़कर देश और की उपलब्धियां और सरकार की उपलब्धियां से अवगत होता है और उन उपलब्धियों से लाभ लेता है। अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नेक्स्ट, डॉक्टर सतीश पुनिया, Not present. नॉट प्रेजेंट। ओके, श्रीमान महेश केवत, श्रीमान महेश केवत, हाँ मैडम, श्रीमती निर्मला सीतारमण। Thank you, sir. Even at the stage of introduction, I had mentioned that we are discussing amendments to the Payment and Settlement System Act 2007, the Income Tax Act of 2025, and also amendment to the Finance Act of 2026. Sir, post the budget this year,
considering the evolving global situation, considering No, ministers, after minister reply, I will call you. See, when I called you, you are in person. No. Please take your seat. Just for a minute. क्या हुआ? Nothing. Oh, नहीं. Please. Before calling Honorable Minister, there is a for Dr. John Britas to briefly put his points. Then I'll call him. For 2 minutes. It's for 2 minutes. And you are not here. I am here, sir. I am here, sir. Please. Sir. Sir, please don't deny the right of a member who have moved a motion. You are doing a wrong thing. John Britas ji. And all these 10 courts are more into John Britas ji, please. Yes. 1 minute. Honorable members, there is one direction by chairman, the then chairman. It's of, I think, 1974. On the same issue, when the mover was not present in the house. Please, as they are telling you are not there. After calling ma'am to reply, then please. I'll come to you. Just I'll come to you. But first let me read the direction of the chair. I cannot restrain myself from observing that the mover of the resolution is not present here, nor anyone who appended their names to the resolution is present here. As the opposition wants the ministers to be present, when somebody moves a resolution, he should also be present to hear the debate. This is the ruling. Even then, briefly, in 2 minutes you put the point. Please. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Please. I am thankful to the deputy chairman. 2 minutes only. 2 minutes. Sir, 5 minutes minimum, sir. Sir, Honorable Minister. Please. Honorable, baite, what is it? Just briefly you tell you, आपकी समय जा रहा, आपका समय जा रहा. Sir, Honorable Minister has facilitated promulgation of the ordinance and subsequently brought this bill, thinking that the foreign capital would come to this country. And she is much more relying on the promises of the foreign countries. There have been insistence on the part of US Trade Representative that you need to charge UPI. The same pressure was exerted on Brazil. They didn't heed them. Now, the policy of the government is completely being upended, and she has cleverly brought in the UPI component in this piece of legislation. Madam, see, what was the statement of the Honorable Prime Minister? I am quoting, sir. Prime Minister Modi told first G20 finance ministers and central bank governors in February 2023 that India's digital payment ecosystem had been developed as a free public good. Thus, the current bill goes against the principle of India. The government policy from 2017 to 2025 was to keep digital payment charges away from merchants and consumers. Thus, the current bill
which she wants this House to pass is violation of the solemn assurance of the Honorable Prime Minister. And Madam Finance Minister knows that. This NBCI have been formed by 50-55 stakeholders, including our banks and financial institutions. And she all of a sudden says that, sir, what is it, sir? Time is over, Sir, they are eager. No, Sir, at least the finance, conclude. at least the finance minister should know what I am trying to say. You have already spoken. Sir, I will tell you one thing. Please. This government has to concentrate on the basic issues of this nation. Thank you. Sir, what is Thank it, you. sir? No, time is over. What sir. time, sir? I just I wanted have given 2 minutes. Then I will not speak, sir. Give me 3 minutes. You have already spoken. Give me Finish, 3. Please give me. finish. Sir, what did they talk about the depreciating rupee? 2013, what was the statement of the Honorable Prime Minister? The rupee is in ICU. There is deep corruption in Delhi. That's why the rupee is plummeting. Sir, what is the rupee value now, sir? What is the rupee value? Please. How much rupee you have to pay to get a dollar? Chair. Sir, I can tell you, there is a foreign capital flight that we have happened. Thank you. Sir, over. Sir, Now the- 3 minutes over. No. Thank Sir, you. No. sir, Now I'll request, please. You have 3 minutes. You have already. Give me 1 minute, I'll sum up. No, please. I request the Honorable Finance Please, Minister, now, please come on board Honorable and explain Finance to the Minister nation Srimati Nirmala that Sitharaman why need to they... reply the discussion. Honorable Finance, please. No, sir. I allowed you 3 minutes. The time was 2 minutes. Even I read the ruling. You are not in the house. Please. You are not in the house. Even then I gave opportunity to you. Please do not go. Honorable Finance Minister, please. Honorable Finance Minister. Abul, please. Abul. Honorable Finance Minister. So thank you, sir. Please. Honorable. Please. Thank you, sir. So, sir, Have patience of listening, Honorable Finance Minister. Please. Have patience of listening, Honorable Finance Minister now. Please. so thank you, sir. As I said, we are dealing with 3 different acts and their amendments. Because of the evolving global situation, sir, Income Tax Amendment Ordinance of 2026 was brought in sometime early June 2026. And in that, we had just 2 proposals in the ordinance. The 2 proposals were Please. Once, please, up, please. Sir, that is, Please. John Brittas can please stay here if he wants to hear one line, sir. Yes, That's I a told you, typical Chair. communist style. Blast everybody with not facts. Twist the facts and do something, and also demand my right, I have to speak, all that. And when actually the replies are going to be given to them point by point, they don't have the courage. Cowards! Communists in this country are total cowards. Member has proven that. They can't face facts, but they will go on filibustering, making noise. I have a right. They don't have a right to listen. When the reply is given, I feel like saying it's my right to stand up and reply. I honor every member for whatever they say and reply, taking their names. Honorable John Brittas should stay here to hear the reply, because he's been creating confusion all over, not just here but in the country, because that's the tactics the communists adopt. Total lies, sir. I'm sorry, lies may not be parliamentary, untruths. So when I said there are 3 acts we are dealing with today, one is an ordinance which was passed
on 5th ordinance which was issued on 5th June 2026 in order that we can address some of the challenging global situations. And that ordinance had only two particular aspects. It was issued with two things. First was an exemption of capital gains and interest on investment in G6 to FIIs. So if FIIs were to invest in government securities, they would get exemption of capital gains and also exemption on the tax exemption on the interest for those investments which are made in the G6. So that was one thing on which that ordinance came out. The other aspect that the ordinance came out on was providing again exemption, tax exemption for capital gains and tax exemption on interest on investments again in government securities to the Bank of International Settlement. So the ordinance of 5th June 2026 had only these two issues, and now that ordinance will have to be made into a law or made part of the law. So we are coming with those two, but we are not coming with just those two. We are bringing in newer things as well, in addition, that is. So what are those newer things, sir? Again, keeping the global developing dynamic situation in mind, we have come up with a few more additional points which relate to taxation and other laws. So the first one, I'll be very brief about what are the additional things which are coming in. The first one is to extend the exemption period which are provided for foreign companies which provide capital goods equipments to a contract manufacturer. Take an example, sir, of some kind of a commodity which is being produced. But when producing that, they need certain tools or equipments to produce that. Those tools and equipments are not manufactured in this country, but they need that here. They may bring it here, use it here, and once the production is over, it may go back or it may be left behind because they are specifically made and designed for the production of these kind of tools. So for them, the exemption of tax, the exemption from tax for those equipments which are uniquely for the manufacture of certain things that are produced in this country. So that with some conditions, we are allowing that exemption. The conditions, I will just say one or two conditions which have to be satisfied for becoming eligible for those exemption is the ownership of such capital goods or equipment or tools remains with the foreign company. It cannot be transferred to the local company. Such capital goods and equipment or tools is under the control and the direction of the contract manufacturer who's manufacturing in this country. Third, the contract manufacturer should be company resident in India and located in a custom bonded area. And finally, the contract manufacturer produces electronic goods on behalf of a foreign company for a consideration. If he fulfills these conditions, they will be eligible for the tax exemption for those tools, for those machines which come uniquely for manufacturing those items. So what would this do? For instance, some of the items are laptops, all-in-one personal computers and tablets, servers, ultra-small form factor USFF, as they say, sub-assemblies to the finished goods, and so on, sir. So this is aimed at getting larger ecosystem to come into the country so that a specific manufacturing which is now giving good results for India can now get the entire ecosystem to India so that that process of manufacturing is not a one-off item. So many other investments will come for
providing additional support to that ecosystem itself and create employment, bring in newer investments and so on. So a larger ecosystem for enabling contract manufacturing for, not limited to, for mobile phones, laptops, personal computers, servers and related equipments which can be done in India. So that is one of the additional thing over and above the two ordinance related matter. The amendments are for this. The second one, sir, amendment of conditions of provisions providing exemption to a foreign company procuring data services from a specified data center. So this also comes with a lot of, and this exemption is provided up to the year ending 31st March 2047. Long-term certainty so that investments come. These are big ticket investments. They have to come with a certain certainty which can be provided to them. They also have a lot of such conditions. Now, what is the outcome that we are expecting by bringing this? The outcome that I'm expecting is to provide ease of doing business for companies, providing cloud services by way of procuring data center services in India. The amendment is also expected to enable much larger ecosystem, again, of Indian data centers, providing data center services to a foreign company. The reform will enable AI data cities in India and is expected to bring in significant investments for AI data cities in India. Sir, I want to add beyond the language of the Act itself, which I've partly narrated, that there is an apprehension that this is only for foreign companies. These kind of exemptions are not going to be available for Indian companies. It's not true at all, sir. I want to explain how. This will enable, sir, current data centers to expand their footprints and services for foreign cloud service providers. There are foreign cloud service providers, but there are very many Indian companies providing services to them. They also get covered. This will have the impact of large-scale expansion and setting up of hyperscale data centers in India. Also, the investments, the assets, this is a very critical and important point, sir. The investment, the assets, the employment, and also the profits which will rest with Indian companies on account of data center reforms. I repeat that line, sir. The investment, the assets, the employment, and also the profit will rest with Indian companies on account of the data center reforms. Another point, sir. The reseller entity of this foreign cloud service provider will also be an Indian entity. These taxes shall also come to India back again and will expand the reseller ecosystem. The exemption to the foreign cloud service provider is given till 2047 because data center is a long gestation asset and long working life. Investor makes heavy investment and in turn seeks certainty of tax treatment. So it is not just for foreign companies. In fact, the Indian company ecosystem can expand because of this exemptions that we are giving. Third, sir, other than the two which come along with the ordinance which have to be made into a law, the additions that we are making, the third addition is exemption to foreign mining company engaged in the business of selling rough diamonds. I can't see Member Vikramjit Sawhney, who spoke elaborately on this point. Foreign mining companies, sir, are allowed, not today, since 2016, to display uncut and unassorted diamonds in specified or special notified zones, such as Mumbai and Surat,
And such display is exempted from forming a business connection in India. They come, bring stocks, display it, and whatever is chosen is also taken back, and then they bill it from there. They have no other connection with any of the buyers or companies which are here. This has been on since 2016. For enabling sale of rough diamonds in these zones, safe harbor rules or a framework under Rules 99, 102 of the Income Tax Rules 2026 was provided for foreign mining companies engaged in the business of selling raw diamonds, uncut diamonds, wherein the profit and gains of the eligible business chargeable to tax shall be 4%. That is the safe harbor, or more of the gross receipts from that business. So in order to promote the ecosystem for trading in raw and rough diamonds and provide tax certainty, it is proposed through this amendment that we are bringing to expand the definition of raw or rough diamonds to include assorted diamonds and also provide exemption to a foreign company engaged in the business of diamond mining or a foreign company functioning as a site holder, broker, aggregator, or a tender and auction entity for such businesses for a period of 15 years up to tax year ending 31st March 2041. We have elaborately mentioned each one of the categories so that there is no confusion about who is eligible and who is not eligible. The new provision, therefore, is proposed to be inserted at serial number 13F of the table in Schedule 4 of the Income Tax Act 2025. The amendment outcome, sir, what are we expecting from this? The amendment is expected to shift some of the diamond trading businesses which happen in places like Amsterdam, Antwerp, or parts of Israel to move to India, diamond trading business to India, and also promote ecosystem for financing of buying and selling of diamonds in India itself. Now also somewhat in Middle East, Dubai, and so on. So all these people, because of this exemptions provided, can now do that wholesale business here and be accessible to Indian buyers. That is the outcome that we expect, that the entire ecosystem can be available here. India is very well known for polishing and cutting the diamonds. Now, if that business also moves here, our diamond industry, which is a very labor-intensive, maximum labor employment is provided by these units, can benefit. So, fourth amendment which we are bringing here. Exemption to a foreign company storing components for sale to a contract manufacturer involved in manufacturing of specified electronic goods. So I just want to elaborate on this. Assume that there is a phone manufacturer. There are several thousands of little parts which go into making that phone. Each time he wants a particular component, he will have to place an order, wait for the component to be brought in, then supplied, then make it. But making of these items, which are very export sensitive, require timely supply of these components. There is no way in which you can expedite the supply if you have to each time import it. So among the industry, the idea was, if there was, unless they're keeping it in a ship in the high seas, instead of that, they could hold it within our borders, somewhere close to the port, not as a ownership. It's in the ship or here, but immediately supplied to that particular notified manufacturer, that particular component, and whatever tax has to be paid will be paid. Therefore, foreign companies were provided a safe harbor till now at the rate of 2% or more of the gross receipts from the business activity of storage of components in a warehouse in a custom bonded area. So the framework is part of Rule 99 to 102 of the Income Tax Rules 2026, applies where such components are sold to a contract manufacturer, specified fellow,
of specified electronic goods. So what are we proposing now? Accordingly, it is proposed that exemption may be provided on the income of a foreign company storing components for sale to a contract manufacturer involved in manufacturing a specified electronic goods for a period of 15 years up to the tax year ending 31st March 2041. So the specific or specified electronic goods are again mobile phones, laptops, all-in-one personal computers and tablets, servers, ultra-small form factors, USFF, sub-assemblies to the finished goods mentioned in clauses 1 and 2, that is phone and laptops, hearables, wearables, and accessories related to finished goods mentioned in clauses 1 and 2. So what is the outcome we are expecting out of this? Amendment is expected to enable a much larger ecosystem for contract manufacturing of mobile phones, laptops, personal computers, servers, and related components in India. So the fifth additional thing that we are bringing on is exemption to a unit holder on dividend received or receivable from a special purpose vehicle of business trust where such SPV is a new regime. So this is a very simplified one, which I think all of us were aware of. We brought in the accumulated MAT, which was in the old income tax regime, sort of as a final tax, and from now we wouldn't collect MAT under the old regime, nor do we want to collect under the new regime. But in order to exhaust the MAT or the MAT, which has already got accumulated, we said companies will have to move over to the new tax regime. Now, when they move into the new tax regime with the accumulated MAT, which they would want to exhaust, they would have a SPV in the case of InvITs and so on. They would have an SPV. That's one thing which has happened through the finance bill. In the new income tax regime, sir, we don't allow any exemptions, which is well known to everybody. But because people are moving into the new regime with accumulated MAT, they have to exhaust it. Then what happens is if they pass the dividend from their hand to the unit holder, because it's all units which come together, InvIT is a set of units, Ratus is a set of units. Unit holder is an individual. When they pay the dividend in the new tax regime, these dividend receivers, unit holders, will be subject to tax. So that is inconsistent with the practice which existed in the old regime. So when they have come here to exhaust their MAT, if they are exhausting their MAT, the dividend payable, we are now exempting for in the hands of the unit holder, who is an individual. So the SPV of a business trust may also have to move to the new tax regime, either to avoid final MAT tax in the old regime or to avail accumulated MAT credit in the new regime, which is what I explained. So this will lead to unit holders losing the exemption on dividend income, which is why we are giving the exemption to the unit holder. What would this be as an outcome? The amendment is expected to further boost investments in real estate and infrastructure through business trusts, because we are making it consistent. So the sixth one and the last one is over and above the two which were part of the ordinance. The sixth one is relaxation of conditions for eligible investment funds where an eligible fund manager relocates into India. So this is a very interesting case because as per 9(2) of the Income Tax Act 2025, income is deemed to accrue or arise in India if it accrues or arises directly or indirectly through or from any asset or source of income in India, or any property in India, or any business connection in India, or transfer of capital assets situated in India. Now, when all this is so completely India, there are cases where a fund operates outside.
but the fund manager is located in India. In order to exempt such cases, several conditions have been prescribed in respect of an eligible investment fund and also the fund manager. Presently, there are 13 conditions for the eligible investment fund and 4 conditions for the fund manager. Some of these conditions stand relaxed in IFSA. However, there have been persistent representations from the industry to rationalize the said conditions so that fund managers could relocate to India. So, Schedule 1 of the Income Tax Act of 2025, sir, is proposed to be amended. So that's the amendment, the 6th one, to relax the conditions for being an eligible investment fund. It has been proposed to reduce the number of such conditions from 13 at present to only 5 conditions to rationalize the said conditions. The proposed 5 conditions are these: fund is not resident in India, fund is resident in a country or specified country which is having a DTA, double taxation avoidance agreement with India, or in a notified jurisdiction. Aggregate investment by Indian residents does not exceed 5% of the corpus. Fund does not carry on or control and manage directly or indirectly any business in India. No person acting on behalf of the fund engages in any activity which constitutes business connection in India other than the activities undertaken by the eligible fund manager. So what is the outcome that we are expecting out of this, sir? The amendment is expected to promote fund management activity in India. Sir, globally it is recognized Indians are exceptionally good in fund management. We want more of them to come reside in India and manage funds. Funds can be outside, but if the fund manager comes to India, we are able to have better administration and more people who are very good in this field can get opportunities within India. So the amendment is expected to promote fund management activity in India, as it will enable relocation of fund managers to India. As I said, Indians have much expertise in fund management, and it is expected that many fund managers of global funds will relocate to India in IFSC or also elsewhere in the country. So ordinance plus these amendments are the ones which we are talking about, sir. So I'll come to the most discussed and debated points, sir. On the UPI. First of all, what does this amendment do about the UPI? So the Taxation and Other Laws Amendment Bill, as we call this Bill 2026, which has been passed by the Loksabha, which is now being discussed here, proposes to amend Section 10A of the Payment and Settlement Systems Act 2007. The amendment is an enabling provision. It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. Let this be clear. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges. So I'd like to read that again. The enabling provision that we are bringing in today does not impose any tax or transaction charge on UPI users. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges. Once the bill is passed in Parliament, the UPI and Services Steering Committee, headed by the National Payments Corporation of India, will consider and decide whether
any MDR should be introduced, and if so, its scope and structure. So that is the committee which will have to see what is the scope of anything now that the enabling provision allows them. Therefore, no MDR framework has yet been finalized. Let's take that as the first step. I'll also, before I come to the specifics, want to say experience from Visa and MasterCard. Electronic merchants routinely pay MDR of around 1.5% to 2% or plus more than 2% on credit cards and up to 0.90% on debit cards today too. Yet major retailers generally do not add a separate charge to the customers. So you have these charges on the businesses, but they don't charge separately on the customers. Instead, they actively promote card usage through discounts and EMI offers. For instance, I'm taking names just for us to understand. Amazon, Flipkart, Chroma, Reliance Digital, Vijay Sales, etc. On a 10,000 rupees or up to 1 lakh purchase, you'll typically find them following on credit and debit cards, instant bank discounts, no cost EMI options, additional cashback offers, or exchange bonuses. The merchant is already bearing payment acceptance cost because digital payments help drive higher sales and large ticket sizes. A vast number of electronic purchases are financed through EMI in one form or the other. Customers often choose a card specifically because of EMI and issuer-funded offers. UPI is currently the least attractive option in this category, even with zero MDR. Unlike credit cards, today, nobody offers rewards and issuer-funded discounts on UPI. The sustainable revenue stream can actually enable more innovation such as merchant issuer offers on UPI. So just so that we talk comparably, sir, merchant or payment acceptance charges are used in several major faster payment ecosystems. Australia, sir, up to Australian dollar 0.3 per transaction or 0.50% per transaction. Brazil, about which our honorable member John Britta said, Brazil example. Brazil has 0.22% to 0.33%. I'm giving an indicative charge. Brazil has charges. China, which they'll feel very close towards, approximately 0.40%. I don't know if you'll be able to shout at Beijing, hey, we follow you. Why are you charging on NDR? Are you anti-people? China does it, it's all right. But China has charge. Indonesia, 0.30%. Japan, US dollar 1 or 1.49 flat amount. South Korea, 0.72 to 1.99%. South Africa, approximately 0.4%, capped at 30 rand, which is the South African currency. Singapore has 1.30%. Thailand has up to 10 baht, which is their currency. US, 0.5%. Now, come to our today's situation, about which a lot of members spoke. Feeling strongly about it, sir, I want to say. Will consumers pay any UPI charge? No. UPI has remained free for consumers since its launch, and every Indian will continue to make this instant digital payment without paying a transaction charge. Sir, I want to just, क्योंकि बहुत सारे members हिंदी में बताए, मेरा हिंदी थोड़ा कमज़ोर है, फिर भी मैं बोलना चाहती हूँ. I heard Honorable Member Sanjay Singh saying, Chai Bala,
सब्जी वाला, ठेले वाला, पटरी वाला, छोटे छोटे व्यापारी, मिनिमम सर्विस चार्ज वगैरह, ये कोई एमडीआर पे नहीं करेंगे। चाय वाले के ऊपर, सब्जी वाले के ऊपर, ठेले वाले के ऊपर, पटरी वाले के ऊपर एमडीआर चार्ज नहीं लगेगी। सर, छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई's इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है। इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है। एनी फ्यूचर एमडीआर will apply only to a limited category of merchant transactions above a certain prescribed high threshold. The vast majority of merchant transactions, including ordinary low value transactions, will continue to remain free. इसीलिए मैं उसी शब्दों को रिपीट करना चाहती हूँ। चाय वाला, रेडी पटरी वाला, छोटे दुकानदार, उनके ऊपर एमडीआर लगाने वाले नहीं है। प्लीज। सर, ये बात हमारे कम्युनिस्ट दोस्तों के लिए अच्छा गाना जैसे मीठा मीठा लगने वाले थे, मगर वो नहीं है अभी। हाँ, उनको हम जाके बोलना चाहिए, भैया प्लीज इतना अच्छा खुशखबरी हम आपको दे रहे हैं, मगर बाहर जाकर दोबारा वही गलत फहमियां रगड़ रगड़ करके बोलना नहीं है। पार्लियामेंट में जब जवाब दे दिया, बाहर जाकर के गलत फहमी फैलाने वाले के ऊपर इस देश में कुछ प्रश्न उठाना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कानून बनाना चाहिए, कम से कम उनके ऊपर प्रश्न तो उठाना चाहिए। क्या है भाई, पार्लियामेंट में सुन लिया, एनपीसीए कल तो मीडिया में बोल दिए, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा प्रेस नोट भी आ गए ना, फिर भी हम हमारे ही ध्वनि में जाएंगे। गलतफहमी कहाँ सर? आदत के मजबूर। केरल में भी साफ हो गए। हाँ, इसीलिए केरल में भी टोटल साफ हो गए। भारत देश में अभी कई कम्युनिस्ट का राज्य नहीं है। सर, so the amendment does not contemplate a blanket charge on vegetable vendors, चाय वाले, फ्लावर वाले, ऑटो ड्राइवर्स, किराना स्टोर, किसी के ऊपर हम कोई इसमें नहीं। इससे ज़्यादा इस विषय में और ना करते हुए सर, वर्ल्ड लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम हमारा है। इन जुलाई 2026 अलोन we processed 2,366 crore transactions worth, in July alone, worth 29.9 lakh crores, world records. ये हमारा छोटे स्वनिधि व्यापारी या डिजिटल पेमेंट के द्वारा छोटे छोटे क्यूआर कोड्स रखने वाले, रेडी पटरी वाले, सबके देन है भारत देश का। उनके ट्रांसैक्शंस के द्वारा हमारी यूपीआई बढ़ रही है। और हमारे ही स्पीकर शायद हमारे महाराष्ट्र से जो बात किए, धनंजय याद दिलाए हमें कैसे फॉर्मर वित्त मंत्री जी हंसी मजाक से हमारे देश में पावर है क्या, छोटे लोगों के पास इंटरनेट है क्या वगैरह पूछे थे एक समय पर। सब लोग उनके साथी हंस रहे थे। आज उसी यूपीआई 2,366 करोड़ एक ही जुलाई 2026 महीना में ट्रांसैक्शन किए पूरे देश में चल रही है। हम इसका वैल्यू समझ रहे हैं और 11 देश में लाइव यूपीआई आज भी अवेलेबल है।
सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया में। इसीलिए मैं सभी मेंबर्स को ये बताना चाह रही हूँ, इस मॉडल को सस्टेनेबल रखना भारत देश के हित में, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत बड़ा वरदान है और हमारे लिए ये बहुत बड़ा ताकत है। आज देश में बहुत विदेश में हमसे पूछ रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमें भी दे। ये मॉडल सस्टेनेबल रहना है, सेफ रहना है, रिसिलिएंट रहना है, इनोवेशन इसमें और ज़्यादा होना है। इसीलिए हम इसमें गलतफहमी फैलाना नहीं है। मैं स्पष्ट तौर से आपके सामने आपके द्वारा सभी मेंबरों को इसमें जो भी है गलतफहमियां उसको हटाने के लिए कोशिश की। धन्यवाद सर। माननीय सदस्यगण, नो यहाँ नहीं है। I shall now put the statutory resolution moved by Dr. John Britas. Please do not disturb. No name is there. यहाँ कोई नाम नहीं. Please. I shall now put the statutory resolution moved by Dr. John Britas to vote. The question is that this House, again I'll repeat, I shall now put the statutory resolution moved by Dr. John Britas to vote. The question is that this House disapproves of the Income Tax Amendment Ordinance 2026, number 2 of the 2026, promulgated by the President on 5/6/2026. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The statutory resolution is negative. I shall now put the motion moved by Srimati Nirmala Sitharaman ji to vote. The question is that the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 as passed by Loksabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 to 7 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 to 7 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Srimati Nirmala Sitharaman ji to move that the bill be returned. Sir, I rise to move that the bill be returned. Motion moved that the bill be returned. The question is that the bill be returned. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is returned. Now, special mentions. Honorable members, special mention. First, Dr. Medha Visram Kulkarni. Namaste, sir. My subject for today's special mention is need to restore the storage capacity of Khadakwasla Dam and strengthen Pune's water security. Honorable Vice Chairman, sir, I seek to draw the attention of the government to the serious and long-term challenge posed by the declining storage capacity of the Khadakwasla Dam, which remains the principal source of water supply for Pune city and several adjoining areas. Recent assessments indicate that the dam, originally designed to store approximately 3.75 TMC of water, has lost more than half of its effective storage capacity due to special mention is going on. decades of silt accumulation. As a result, its current holding capacity has reportedly reduced to nearly 1.75 TMC. This substantial loss of storage has weakened the reservoir's ability to conserve water during the monsoon and meet growing urban demand during the dry periods. Pune is one of India's fastest growing metropolitan regions, with the increasing requirements for drinking water, industry, public services, and environmental sustainability. The reduced carrying capacity of the reservoir places immense pressure on Water Management Authority, particularly during years of deficient rainfall.
It also raises concerns regarding the long-term water resilience and the adequacy of existing storage and distribution systems. I urge the government to coordinate with the concerned authority to examine measures such as scientific desilting, catchment area treatment, sediment management, reservoir modernization, and improved water budgeting. A comprehensive assessment of the Khadakwasla reservoir system and its future sustainability is essential to safeguard the water security of millions of citizens. Water security is central to urban development, public health, and economic growth. Timely intervention today will help prevent a far more serious crisis in the years ahead. Thank you, sir. Thank you. माननीय श्री अमर पाल मौर्य जी. धन्यवाद. My subject demand for resumption of operations at the Parag Cooperative Milk Production Center located at कटरा मेदनी इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट. महोदय, मैं सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ की नगर पंचायत कटरा मेदनी स्थित पराग सहकारी दुग्ध उत्पादन केंद्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं. यह दुग्ध संकलन केंद्र कभी क्षेत्र के दुग्ध उत्पादक किसानों की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार था. पराग डेयरी द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से गांव-गांव छोटे-छोटे दुग्ध संकलन केंद्र स्थापित किए गए थे, जहां से किसानों का दूध कटरा मेदनी स्थित मुख्य केंद्र पर एकत्रित होकर आगे प्रसंस्करण हेतु भेजा जाता था. इस व्यवस्था से स्थानीय किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य एवं नियमित आय प्राप्त होती थी, किंतु यह दुग्ध संकलन केंद्र 3 साल से पूर्णतः बंद हो गया है. वर्तमान में केंद्र पर सभी मशीनें निष्क्रिय पड़ी हैं एवं सार्वजनिक परिसंपत्तियों का कोई उपयोग नहीं हो रहा है. इस केंद्र से लगभग 20,000 किसानों को लाभ मिलता था तथा अनेक परिवारों की आजीविका इससे जुड़ी हुई थी. अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि किसानों के लंबित भुगतान एवं अनियमितताओं की समीक्षा की जाए तथा कटरा मेदनी स्थित पराग सहकारी दुग्ध उत्पादन केंद्र को आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनः संचालित करने हेतु आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासनिक कदम उठाए जाएं, जिससे क्षेत्र के दुग्ध उत्पादक किसानों की आय में वृद्धि हो तथा ग्रामीण दुग्ध सहकारिता को पुनर्जीवित किया जा सके. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. माननीय डॉक्टर अनिल सुखदेव राय बोंडे. Thank you, sir. Sir, subject is need for policy to combat antimicrobial resistance. Sir, I seek to bring to the attention of the government the growing threat of antimicrobial resistance, a silent pandemic that is weakening our ability to treat common infections and threatening the very foundation of modern medicine. India is among the world's highest consumer of antibiotics. Misuse and overuse in both humans and animals, over-the-counter access, and the poor waste management has made many infections harder and more expensive to treat. In 2021, India recorded an estimated 267,000 deaths directly attributable to AMR, with nearly 1 million associated deaths, ranking 57th globally in antimicrobial resistance mortality. This growing resistance means longer hospital stays, higher treatment cost, and increased mortality, particularly among older adults. It also poses serious risk to the surgeries, cancer therapies, and intensive care, where effective antibiotics are essential. While our Modi government, India has launched the National Action Plan on AMR2, challenges remains. Poor surveillance, weak cross-sector coordination, unchecked antibiotic use in agriculture and animal husbandry, and inadequate public awareness. I urge the government to ensure implementation of NAP AMR 2.0 with dedicated funding,
strict regulation of antibiotic sale, and public education campaigns. We must treat antibiotics as a shared national resource, not as a routine consumer good. Timely action on AMR is not just a health necessity, it is national development imperative. Thank you, sir. थैंक यू। माननीय सदस्यगण, अप्रूव्ड टेक्स्ट ही आप पढ़ें। माननीय श्री मोहम्मद नदीमुल हक, नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री सुजीत कुमार जी, माननीय सुजीत कुमार जी। Thank you, Deputy Chairman, sir. Through my special mention, I seek to bring to the attention of the government on the need to establish a national climate observatory in Bhubaneswar, Odisha, under the patronage of premier scientific institutions such as the Ministry of Earth Sciences, or within the long-term ecological observatories, that is LTEO in brief, program under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Sir, Bhubaneswar lies close to the Bay of Bengal coast and serves as a strategic hub for scientific research, education and policy in eastern India. The city is proximate to critical coastal ecosystems including the Lake of Chilika, which is the country's first Ramsar site and largest brackish water lagoon, and is increasingly exposed to climate-related stress such as sea level rise, cyclones, salinity intrusion and shifting ecological patterns. Currently, India's major climate observation facilities are situated in Pune or under individual LTO sites in Gujarat and the Western Ghats, with no dedicated long-term climate observatory focused on the eastern coastal region. Sir, a national climate observatory in Bhubaneswar would fill this critical gap, strengthening the country's capacity to monitor climate-sensitive coastal and lagoon ecosystems. I therefore urge the government to establish a national climate observatory in Bhubaneswar, Odisha, under the leading national scientific institution, integrated with the government of Odisha, local universities and coastal communities to support long-term research and innovation. The observatory would advance research on sea level change, salinity, biodiversity, fisheries, and atmospheric processes, and generate climate data to inform policy and disaster preparedness, and create skilled employment opportunities in oceanography, ecology, and data sciences for the youth of the country. Thank you. थैंक यू। माननीय श्री बाबू भाई जयसंग भाई देसाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मानसून के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों, फ्लाईओवर की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को बधाई देता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में देश भर विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे, राजमार्ग, सुरंगों और पुलों का अभूतपूर्व निर्माण हुआ है। इन परियोजनाओं ने देश की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया है, यात्रा समय को कम किया है तथा व्यापार, पर्यटन और आर्थिक विकास को नई गति प्रदान की है। किंतु प्रत्येक वर्ष मानसून के दौरान विभिन्न राज्यों से सड़कों के घसने, गहरे गड्ढे बनने, पुलों एवं फ्लाईओवरों में दरारें आने, जल भराव जैसी घटनाओं की खबरें सामने आती है। ऐसी घटनाएं न केवल करोड़ों रुपए के सार्वजनिक निवेश पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, बल्कि लाखों यात्रियों के जीवन और सुरक्षा के लिए भी गंभीर चुनौती उत्पन्न करती है। समय पर निरीक्षण और रखरखाव के अभाव के अनेक दुर्घटनाएं घटित होती है। अतः समय की मांग है कि सभी राष्ट्रीय राजमार्गों, पुलों और फ्लाईओवरों का मानसून पूर्व एवं मानसून पश्चात अनिवार्य संरचनात्मक ऑडिट कराया जाए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, सेंसर आधारित हेल्थ मॉनिटरिंग प्रणाली तथा रियल टाइम डिजिटल निगरानी जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर संभावित खतरों की समय से रहते पहचान की जाए। डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि के दौरान गुणवत्ता की कठोर निगरानी सुनिश्चित की जाए तथा निर्माण में लापरवाही पाए जाने वाले संबंधित एजेंसियों और अधिकारियों की स्पष्ट जवाबदेही तय की जाए। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर हाईवे एवं ब्रिज सेफ्टी मिशन प्रारंभ कर देशवासियों को सुरक्षित और विश्वसनीय सड़क अवसंरचना उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाए जाए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। श्रीमती दर्शना सिंह जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।
मैं आज अपने गृह जनपद चंदौली उत्तर प्रदेश के चकिया नौगढ़ क्षेत्र में स्थित राजदरी देवदरी जलप्रपात एवं चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य के विकास तथा पर्यटन सुविधाओं के विस्तार से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूँ। महोदय, विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं और चंद्रप्रभा नदी से घिरा यह क्षेत्र अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, घने वनों और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यह वही ऐतिहासिक भूमि है जिसकी पृष्ठभूमि पर आदरणीय देवकी नंदन खत्री जी ने चंद्रकांता की रचना की। आज इस क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सरकार द्वारा नेचर सेंटर, ऑडिटोरियम तथा कॉटेज जैसी आधारभूत सुविधाएं विकसित की गई हैं। अब आवश्यकता है कि इन सुविधाओं का विस्तार कर उन्हें अधिक प्रभावी और उपयोगी बनाया जाए। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में पर्यटन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। इसी क्रम में मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि इस क्षेत्र को स्वदेश दर्शन 2 योजना के अंतर्गत विशेष पर्यटन सर्किट में शामिल किया जाए। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेंगे, पलायन रुकेगा तथा स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। महोदय, चंदौली, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, अपने ब्लैक राइस, आदम चीनी चावल जिसे 2023 में जीआई टैग मिल चुका है, जरी जरदोजी कला के लिए भी प्रसिद्ध है, जिन्हें पर्यटन से नया बाजार मिलेगा। अतः सरकार से निवेदन है कि इस क्षेत्र के समग्र विकास हेतु इस क्षेत्र को स्वदेश दर्शन 2 योजना में शामिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। धन्यवाद। डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं सरकार का ध्यान बिहार में खेल अवसंरचना के विस्तार की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, टारगेट ओलंपिक, पोडियम स्कीम तथा खेल विश्वविद्यालय जैसी अनेक ऐतिहासिक पहलें की हैं। इन योजनाओं से देश भर में खेल संस्कृति को नई ऊर्जा मिली है और भारत का अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रदर्शन भी लगातार बेहतर हुआ है। किंतु बिहार जैसे प्रतिभा संपन्न राज्य में इन योजनाओं का अपेक्षित लाभ अभी पूरी क्षमता से नहीं पहुंचाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों प्रतिभाशाली खिलाड़ी उचित प्रशिक्षण, आधुनिक स्टेडियम, खेल विज्ञान एवं खेल चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में अपनी प्रतिभा को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। बिहार ने हॉकी, कबड्डी, एथलेटिक्स, कुश्ती, तीरंदाजी और अन्य खेलों में अनेक प्रतिभाएं दी हैं। यदि केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत बिहार में अधिक खेलो इंडिया सेंटर, स्पोर्ट्स एक्सीलेंट सेंटर, मल्टीपर्पस इंडोर स्टेडियम तथा जिला स्तर पर आधुनिक खेल सुविधाओं का विस्तार किया जाए तो राज्य के युवाओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन का बेहतर अवसर मिलेगा। अतः मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि खेलो इंडिया के अंतर्गत बिहार के लिए विशेष अवसंरचना पैकेज पर विचार किया जाए। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, कोचिंग, स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स मेडिसिन तथा छात्रवृत्ति सुविधाओं का विस्तार किया जाए। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया एवं पूर्णिया जैसे प्रमुख शहरों में राष्ट्रीय स्तर के बहुउद्देशीय खेल परिसर भी विकसित किए जाएं। धन्यवाद। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान भारत में नकली दवाओं के भयावह संकट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह केवल धोखाधड़ी
या चोरी का मामला नहीं बल्कि संगठित अपराध का जाल है जो हमारे नागरिकों के जीवन और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था दोनों को गंभीर क्षति पहुंचा रहा है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार भारतीय दवा कंपनियों को प्रतिवर्ष लगभग 4 से 5% का राजस्व आर्थिक नुकसान नकली दवाओं के कारण हो रहा है, जो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, जिसमें फार्मास्यूटिकल क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित है। पिछले 10 वर्षों में 32,000 से अधिक दवा नमूने गुणवत्ता परीक्षण में फेल हुए हैं। इन आंकड़ों के पीछे वे अनगिनत मरीज हैं जिनकी जान नकली दवाओं ने ली और जिन्हें इसका पता तक नहीं चला। नकली दवाओं का व्यापार एक संगठित अपराध से जुड़ा है। अक्सर यह देखा गया है कि यह वही नेटवर्क है जो अन्य अवैध व्यापारों से भी जुड़े रहते हैं। यह एक जघन्य अपराध के साथ साथ देश की प्रतिष्ठा और वैध फार्मा निर्यात पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। महोदय, मेरी स्पष्ट मांग है कि नकली दवाओं के पूरे नेटवर्क को संगठित अपराध की श्रेणी में कानूनी रूप से परिभाषित किया जाए। जिस भी स्थान, फैक्ट्री, गोदाम, लैब या किराए की इमारत का उपयोग नकली दवा निर्माण के लिए किया गया हो, उसे तत्काल रूप से जब्त किया जाए। नियामक संस्थाओं की जवाबदेही तय हो और उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। माननीय श्रीमती अधिकारी मायूम शारदा देवी। Honorable Deputy Chairman, this is my maiden speech. Today's my subject is need to grant National Sports Federation recognition to Thangta. I seek to draw the attention of government to need for granting National Sports Federation recognition to Thangta, one of India's oldest indigenous martial arts and a proud symbol of cultural and sporting heritage. Thangta is not merely a martial art. It instills discipline, courage, self-control, and patriotism among the youth. Over the past 3 decades, it has evolved into a modern competitive sport with 31 affiliated state and union territories units, regular, national, Asian, and world championships, and participation in 24 countries. It has already been included in Khelo India, School Games Federation of India, and All India Inter-University Championship. I sincerely appreciate Government of India's sustained efforts to strengthen the sports in the Northeast through the National Sports University, Khelo India Infrastructure Project, National Center of Excellence in Manipur, and the annual Khelo India Northeast Games. The Honorable Prime Minister has also recognized Thangta, an important indigenous sports of India. Granting National Sports Federation recognition would be a natural progression of this vision. Manipur is steadily moving towards peace through continuous efforts of central and state governments. As rehabilitation and resettlement of internally displaced families continue, National Sports Federation recognition for Thangta can serve as a powerful instrument of youth engagement, employment generation, social harmony, and national integration, while preserving an invaluable part of India's heritage. I therefore urge government to grant National Sports Federation recognition to Thangta, Federation of India at the earliest, in the interest of our youth, our sporting ecosystem, and our national unity. Thank you. धन्यवाद।
नेक्स्ट माननीय सदस्य श्री केसरी देव सिंह झाला. Thank you, Deputy Chairman, sir. So my subject is a need for statutory framework to control digital addiction in underage children. Through you, sir, I seek to draw the attention of the government to a grave silent epidemic sweeping our nation, which is the digital addiction among underage children. The recent economic survey has rightly sounded an alarm, warning that compulsive screen time is severely fracturing our children's cognitive capacity, crushing attention spans, and destroying long-term productivity. Our children are being exposed to highly weaponized algorithms designed by global tech giants to ensure endless scrolling, leading to severe mental health crises, sleep deprivation, and depression. More dangerously, minors are increasingly exposed to deeply harmful online content, cyberbullying, and predatory networks without any structural shields. The world is moving rapidly to protect its youth. Australia has enforced a historic law imposing a strict ban on social media accounts for children under 16, backed by massive penalties on tech platforms. France has recently passed legislation banning social media for under 15s, alongside complete mobile phone restrictions in schools. Even within India, states such as Andhra Pradesh and Goa have taken proactive steps, actively evaluating legal frameworks to restrict underage social media access and introduce legislative measures. So, our children cannot be left at the mercy of manipulative design and toxic content. I urge through you the central government to step in, look at a global and state level models, and introduce a comprehensive central statutory framework with strict age-wise verifications protocols to curb digital addiction and safeguard the future of our nation. Thank you, sir. Thank you. Next is Srimati J.B. Mathir Hisham, not present. माननीय सदस्य डॉक्टर कल्पना सैनी. झाला जी की धन्यवाद. मेरा सब्जेक्ट नीड ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड सेफ डिस्पोजल ऑफ द ग्रोइंग ई वेस्ट इन द कंट्री. मैं सरकार का ध्यान एक अत्यंत गंभीर और तेज़ी से बढ़ती राष्ट्रीय चुनौती ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कचरा की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ. आज मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टेलीविज़न, बैटरियाँ, चार्जर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं. लेकिन इनके अनुपयोगी होने के बाद सुरक्षित निपटान की समुचित व्यवस्था न होने के कारण ई वेस्ट की मात्रा लगातार बढ़ गई है. इसमें मौजूद सीसा, पारा, कैडमियम जैसे विषैले तत्व मिट्टी, जल और वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे कैंसर, श्वसन रोग तथा बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं. चिंताजनक यह है कि देश में ई वेस्ट का बड़ा हिस्सा आज भी असंगठित क्षेत्र में असुरक्षित तरीके से निपटाया जाता है. ई वेस्ट प्रबंधन के लिए नियम तो बनाए गए हैं, किंतु जन जागरूकता और प्रभावी क्रियान्वयन की अभी भी आवश्यकता है. अधिकांश नागरिकों को यह जानकारी नहीं है कि पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सुरक्षित निपटान कहां और कैसे किया जाए. अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहती हूं कि देश भर में ई वेस्ट संग्रह एवं वैज्ञानिक रिसाइकलिंग की सुदृढ़ व्यवस्था विकसित की जाए. इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों की EPR का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए. नगर निकायों एवं पंचायतों को स्पष्ट जिम्मेदारी दी जाए तथा राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाए. यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो ई वेस्ट भविष्य में पर्यावरण और जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकट बन सकता है. इसलिए सरकार इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शीघ्र ठोस कदम उठाए. आपके माध्यम से मेरा धन्यवाद. जय हिंद. माननीय सदस्य श्री M. नागराज. Honorable Deputy Chairman, sir, I, being a researcher and professor in the field of highway engineering, transportation engineering, and traffic engineering, I would like to draw the attention of the government in the subject, need for a scientific, sustainable, and future elevated railway solution to urban congestion in Belgavi city, Karnataka. Belgavi stands at a critical juncture in its urban mobility and development. Elevated railway track on viaducts throughout the city would permanently
eliminate crippling railway gate bottlenecks, safeguard daily commuters, and accelerate Belgavi evaluation into modern gridlock-free smart city without disturbing established commercial precincts. Existing railway bridges in densely inhabited area have not adequately responded to sound urban planning imperatives and have generated concerns regarding safety, accessibility, congestion, and community convenience. Proposed 9-kilometer elevated railway track project on viaducts would constitute a comprehensive, scientifically conceived and future-ready urban transport intervention designed to eliminate all 9 existing level crossings within Belgavi city. It would reduce ground-level disruption and dependence upon intrusive ROBs, enhance public safety, ensure unhindered movement of ambulances and emergency services, facilitate heavy vehicle mobility, strengthen long-term infrastructure planning and strategic connectivity, improve accessibility and urban aesthetics, enable urban renewal and economical revitalization, preserve the environment, protect Belgavi's cultural and heritage sensitivity. Successful precedents demonstrate practicability. The Kurukshetra elevated railway track was undertaken to bypass 5 manned level crossing in central Kurukshetra, while the proposed Mandhana-Anwarganj elevated railway corridor in Kanpur seeks to eliminate numerous level crossings. This project is not merely an infrastructural intervention, but a decisive commitment to improving citizens' quality of life amid increasing population and vehicular density. With the visionary leadership and foresight of Honorable Prime Minister, I earnestly urge the government to consider and sanction the elevated railway track project on viaducts across Belgavi city. Thank you, sir. Thank you. धन्यवाद. Next, माननीय सदस्य श्रीमती रेखा शर्मा. Thank you, Deputy Chairman, sir. So I seek to draw attention of the government towards the immense opportunities available for the women in India's rapidly expanding green energy economy. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, India has emerged as one of the world's leading nations in renewable energy deployment and clean energy transition. Ambitious initiatives such as PM Surya Grah, Muft Bijli Yojana, the National Green Hydrogen Mission, and the accelerated adoption of electric mobility are creating new avenues for employment, entrepreneurship, and skill development. As the country advances toward its clean energy goals, there is a significant opportunity to increase the participation of women in emerging sectors such as solar installation and maintenance, electric vehicle servicing, battery management, renewable energy enterprises, and clean technology services. Targeted skill development programs, industry partnership, and entrepreneurship support can enable women, particularly those from rural and semi-urban areas, to become active contributors to this transformation. Several women-led self-help groups across the country have already demonstrated remarkable success in adopting clean energy solutions and community-based enterprises. Building upon these encouraging examples, a focused national effort to promote women's participation in the green energy workforce would further strengthen the vision of women-led development and inclusive growth. I therefore urge the government to consider a dedicated framework for skill development and entrepreneurship promotion for women in renewable energy and allied sectors, enabling them to play a greater role in India's journey toward a sustainable and self-reliant future. Thank you, sir. Thank you. माननीय सदस्य Dr. Satish Punia ji, not present.
माननीय सदस्य श्री चौधरी मोहम्मद रमजान, नॉट प्रेजेंट। माननीय सदस्य श्री महेंद्र भट्ट। सभापति महोदय, मेरा विषय है वेरावल हरिद्वार वेरावल रेलगाड़ी को नियमित करने के संदर्भ में। मैं सरकार का ध्यान ट्रेन संख्या 09203/09204 वेरावल हरिद्वार वेरावल की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। अभी हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा इस गाड़ी का संचालन किया गया है। यह गाड़ी उत्तराखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हरिद्वार को भगवान सोमनाथ की धरती, पुष्कर तीर्थ, खाटू श्याम मंदिर, माउंट आबू और राजधानी दिल्ली से जोड़ती है। यह पहली ऐसी रेलगाड़ी है जिससे इतने प्रमुख स्थानों की यात्रा सुगमता से होती है। इसके कारण देवभूमि में भी यात्रा बढ़ती है तथा देश में इन प्रमुख क्षेत्रों की भी यात्रा बढ़ती है। सोमनाथ तथा खाटू श्याम मंदिर दोनों ही सुप्रसिद्ध तीर्थों में से एक हैं। उत्तराखंड में भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ जाना चाहते हैं। अभी इस गाड़ी का संचालन केवल 4 फेरों के लिए किया गया है, जिससे जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। इस बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि रेल का जो टाइम टेबल है वो इस गाड़ी का समय 36 घंटे अंकित है, जबकि गाड़ी 28 घंटे पहुँच जाती है। इस गाड़ी की समय सारणी को भी ठीक करने की आवश्यकता है। इस गाड़ी को स्पेशल ट्रेन के रूप में संचालित किया गया है, जिसमें अतिरिक्त किराए का भुगतान किया जाता है, जबकि इस गाड़ी के संचालन में रेगुलर ट्रेन की तरह विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस ट्रेन को नियमित कराया जाए, इसकी समय सारणी में सुधार किया जाए, जिससे यात्रियों को विशेष सुविधा मिले तथा रेलवे को अच्छा राजस्व प्राप्त हो सके। धन्यवाद माननीय महन जी। माननीय सदस्य श्रीमती माया नारोलिया। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय जी, आपने विशेष उल्लेख के माध्यम से हमें बोलने का अवसर प्रदान किया। जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की नहीं बल्कि वर्तमान की चुनौती है। अनियमित वर्षा, बढ़ते तापमान, सूखा, अतिवृष्टि और बदलते मौसम चक्र का सबसे अधिक प्रभाव हमारे अन्नदाताओं पर पड़ रहा है। इसलिए केवल संकट आने पर राहत देना पर्याप्त नहीं होगा। आवश्यकता है कि हम दूरदर्शी सोच के साथ आज ही भविष्य की तैयारी करें। मध्य प्रदेश मां नर्मदा मैया, चंबल, सोन, ताप्ती जैसी जीवनदायिनी नदियों तथा समृद्ध कृषि परंपरा वाला राज्य है। आवश्यकता केवल प्राकृतिक संसाधनों के उपलब्ध होने की नहीं, बल्कि उनके संरक्षण, संवर्धन और विवेकपूर्ण उपयोग की है। जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देते हुए वर्षा जल संचयन, तालाबों के पुनर्जीवन, सूक्ष्म सिंचाई, जल ग्रहण क्षेत्र विकास तथा भूजल पुनर्भरण को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही हमारी पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणालियों को आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक के साथ जोड़कर अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि अगले 25 से 50 वर्षों को ध्यान में रखते हुए कृषि एवं जल प्रबंधन की एक समग्र और दूरदर्शी रणनीति तैयार की जाए। इसमें मिट्टी के स्वास्थ्य की सतत निगरानी, जलवायु अनुकूल बीजों का विकास, मौसम आधारित वास्तविक समय की कृषि सलाह, जल के दक्ष उपयोग तथा किसानों की जलवायु अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। यदि आज दूरदृष्टि के साथ ठोस कदम उठाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश न केवल अपने किसानों और जल संसाधनों को सुरक्षित करेगा, बल्कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में टिकाऊ कृषि और जल प्रबंधन का एक अनुकरणीय राष्ट्रीय मॉडल भी बन सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य प्रोफेसर मनोज कुमार झा,
not present. माननीय सदस्य श्री मयंक कुमार नायक। जय सोमनाथ सर, थैंक यू सर। मेरा सब्जेक्ट है डिमांड फॉर नेशनल कैंपेनिंग फॉर द प्रिवेंशन एंड द अर्ली डिटेक्शन ऑफ द राइजिंग कैंसर केसेस इन द कंट्री, पर्टिकुलरली ब्रेस्ट कैंसर एमंग द वुमन। सर, मैं सरकार का ध्यान देश में कैंसर से लगातार बढ़ते जा रहे मामलों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। विशेष रूप में महिलाओं में स्तन कैंसर के बढ़ते मामले गंभीर चिंता का विषय है। यदि समय रहते कैंसर की जांच और उपचार शुरू हो जाए तो बहुमूल्य जीवन बचाया जा सकता है। आज ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग, विशेषकर महिलाओं को नियमित कैंसर जांच और स्क्रीनिंग की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। जागरूकता की कमी के कारण भी कई मामलों का पता बीमारी की गंभीर अवस्था में पहुंचने के बाद चलता है। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि कैंसर की प्रारंभिक पहचान के लिए देशव्यापी विशेष स्क्रीनिंग एवं जागरूकता अभियान चलाया जाए। विशेष रूप में स्तन कैंसर एवं सर्वाइकल कैंसर के नियमित जांच के लिए ग्रामीण क्षेत्रों तक मोबाइल स्क्रीनिंग वैन और विशेष जांच शिविर आयोजित किए जाए। इससे साथ ही कि अत्यधिक प्रोसेस्ड खाद्य अस्वास्थ्यकर खानपान और खाद्य पदार्थों में मिलावट के गंभीर प्रभावों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा मानकों की सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। मिलावट करने, प्रतिबंधित एवं हानिकारक रसायनों का उपयोग करने तथा जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों एवं कंपनियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए तथा नियमित सैंपलिंग और निगरानी को प्रभावी बना जाए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि कैंसर की रोकथाम, जागरूकता एवं प्रारंभिक जांच के लिए व्यापक राष्ट्रीय अभियान प्रारंभ किया जाए। थैंक यू सर। धन्यवाद माननीय बैंक जी। अगला नाम बोलने से पहले एक सूचना। Honorable members, now it is 6 p.m. If the House agrees, we may extend the sitting till the disposal of the permitted special mentions. धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामजीलाल सुमन, not present. माननीय सदस्य श्री राघव चड्ढा। सर, थैंक यू सर। आपने अपॉर्चुनिटी दी स्पेशल मेंशन कैटेगरी में एक इम्पॉर्टेंट इशू को हाईलाइट करने की जो हमारे देश की आम जनता से जुड़ा हुआ है, मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। सर, माय सब्जेक्ट इज कंसर्न ओवर विदहोल्डिंग ऑफ डेड बॉडीज बाय हॉस्पिटल्स ड्यू टू अनपेड बिल्स। सर, इंसान की डेड बॉडी को आज कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने एक्सटॉर्शन का एक जरिया बना लिया है। 1 जनवरी 2026 को अल्मोड़ा में रहने वाली एक 65 वर्षीय 65 ईयर ओल्ड पेशेंट सीमा जी को इमरजेंसी में एक प्राइवेट हॉस्पिटल लाया गया। सिर्फ 2 घंटे के इलाज के बाद उनकी डेथ हो गई और हॉस्पिटल ने उनके परिवार को 80,000 रुपीज़ का 80,000 रुपये का एक लंबा चौड़ा बिल थमा दिया। परिवार ने जैसे तैसे करके 57,000 रुपीज़ पे कर दिए। केवल 23,000 रुपये 23,000 रुपीज़ देना पेंडिंग था। परिवार रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल ने पेंडिंग बिल की वजह से डेड बॉडी देने से इनकार कर दिया। हद तो तब हो गई सर जब अस्पताल ने परिवार की गाड़ी तक रोक देने की धमकी दी और पुलिस के इंटरवेंशन के बाद डेड बॉडी और डेथ सर्टिफिकेट सौंपा गया। सर, केवल एक प्राइवेट हॉस्पिटल की ये कहानी नहीं है। बीते सालों में पुणे हो, मुंबई, दिल्ली, लुधियाना, ग्रेटर नोएडा में कई हॉस्पिटल्स से ऐसी खबरें आईं। कुछ इंसिडेंट्स को मीडिया ने कवर भी किया, लेकिन ऐसे न जाने कितने परिवार होंगे जो चुपचाप उधार लेकर या ज़मीन जायदाद बेचकर अपने परिजन की डेड बॉडी वापस लेते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स द्वारा इस ब्लैकमेल के शिकार होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पेशेंट्स राइट चार्टर दोनों साफ कहते हैं सर कि कोई भी हॉस्पिटल किसी भी कारण से पेशेंट की डेड बॉडी नहीं रोक सकता। सर, मैं ये आग्रह करता हूं कि इसके लिए एक स्पष्ट और सख्त लॉ बनाया जाए। हॉस्पिटल्स का
जो हॉस्पिटल्स को अपना अनपेड बिल रिकवर करने की, वसूल करने की पूरी राइट है, पूरा हक है, अधिकार मिले, लेकिन किसी परिवार की आंसुओं की कीमत पर नहीं, क्योंकि कोई भी बिल सर किसी इंसान की डिग्निटी, उसके अंतिम सम्मान या अंतिम संस्कार से बड़ा नहीं हो सकता। जय हिंद। धन्यवाद राघव जी। माननीय सदस्य श्री सदानंद महालू सेठ तानमड़े। Thank you, Deputy Chairman, sir. My special mention subject is need for developing a national sustainable coastal tourism framework with Goa as the pilot state. I seek to draw attention of the government to the need for developing a national sustainable coastal tourism framework with Goa as the pilot state. Goa is one of India's leading coastal tourism destinations, attracting millions of domestic and international visitors every year. Tourism is the backbone of the state economy, generating employment and supporting thousands of families. However, the growing number of tourists has increased pressure on beaches, coastal ecosystems, water resources, waste management, traffic, and public infrastructure. Similar challenges are emerging across other coastal states and union territories of India. There is a need for a national framework that promotes sustainable tourism while protecting the environment and improving the quality of life of local communities. The framework should provide scientific guidelines for assessing the carrying capacity of tourist destinations, strengthening waste and sewage management, conserving beaches and marine biodiversity, promoting eco-friendly tourism infrastructure, encouraging community participation, and adopting digital technologies for better destination management. Goa is well placed to serve as the pilot state due to its well-developed tourism sector, extensive coastline, and experience in tourism management. The best practices and policies models developed in Goa can subsequently be replicated across other coastal states and union territories. I therefore urge the government to formulate a national sustainable coastal tourism framework and implement it first in Goa. This initiative will help protect India's coastal environment, strengthen the blue economy, promote sustainable livelihoods, and position India as a global leader in responsible coastal tourism. Thank you, sir. धन्यवाद माननीय सदानंद जी। नेक्स्ट माननीय सदस्य श्री संतोष कुमार पी, नॉट प्रेजेंट। The House stand adjourned to meet at 11 a.m. on Tuesday, the 11th August 2026.